What a difference a change in venue makes. A side that rolled every opposition they faced were reminded a taste of their own medicine twice so far. Khyber Pakhtunkhwa's middle order exposed its fragility in chasing targets beyond their reach. The floodlight show last night was a smash hit by striker Sharjeel Khan. T20 century number 5 rocketed Sindh to a 9-wicket victory. Momentum has shifted its focus at Kingdom Valley National T20. That is century number 5 for Sharjeel Khan. Khyber Pakhtunkhwa needs to hit the straps hard now. Their opponent has regained form. Here we are, the city of Saints, Multan, and all set and ready for match 24, Sindh versus KP. Teams arrived a while ago. KP need to win this one for bigger reasons than just 2 points. They've been the best side in the tournament and they've lost 2 games back-to-back. Sindh, a big win yesterday by 9 wickets, surely will add to their confidence. Multan's here and so is Marina Iqbal alongside me. Let's have a look at the pitch, Marina. It has been a touch tricky when it comes to batting. The bowlers, yes, they were getting some support. Cracks are wide open. But underlights, I think it might give some assistance to batting. The ball was coming onto the bat whenever you waited for it and played your shots. Runs are there. You have to be patient. Let's hit the toss. Ali Yunus with the 2 captains. It is the big one. It's Khyber Pakhtunkhwa taking on Sindh, the 2 table toppers. I've got the 2 captains, Khalid Usman for Khyber Pakhtunkhwa, Saud Shakil for Sindh, and Iftikhar Ahmed is the match referee, all in readiness to flip the coin. And it seems like Khalid Usman will flip it. Tails is the call. Saud Shakil, आपसे पूछने की जरूरत है, क्या करेंगे? नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, बॉलिंग करूंगा। आपने अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ लिया टीम का, तो खुश हैं इस परफॉर्मेंस से? ऑब्वियसली लास्ट मैच जो हम जीते हैं और बहुत बड़ा बूस्टअप था वो टीम के लिए। कोशिश करेंगे आज भी अच्छी क्रिकेट खेलें। पिच आपको कैसा लग रहा है आज? जो अभी हमने लास्ट मैच देखा थोड़ा सा स्लो साइड पे लगा। देखते हैं अब कैसा चलता है। आपकी टीम न्यूज़? 2 चेंजेस हैं। उमर बिन यूसुफ लास्ट मूवमेंट पे बीमार हो गए और अनवर अली की भी थोड़ी सी इंजरी है, तो उसकी जगह साद खान आ गए और आसिफ महमूद आ गए। राइट, ऑल द बेस्ट साउद शकील। खालिद उस्मान, आप पहले बैटिंग करेंगे, कैसा देख रहे हैं इस डिसीजन को? डिसीजन हमारा यही था कि हम बैटिंग करेंगे पहले और बस आ गई है हमारी बैटिंग। आपका अब टूर्नामेंट के हम बिजनेस एंड की तरफ आ रहे हैं, तो 2 मैचेस आप हार गए हैं ऑन द ट्रॉट, क्या ये परेशानी की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह कमबैक करेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छा ही होगा फिर। आपकी टीम न्यूज़? टीम में 2 चेंजेस है। इसरारुल्लाह की जगह आमिर अजमत खेल रहा है और मास की जगह नियाज खान खेल रहा है। राइट, ऑल द बेस्ट खालिद उस्मान। थैंक यू। Right, the news from the center is Sindh has won the toss and decided to bowl first. All right, look at the teams here. 2 changes on each side. As we just heard Khalid Usman, he says that he had to make those changes. Getting Amir Azmat in, good, strengthening the batting, leaving out Israrullah. Niaz Khan comes in. They need pacers or medium fast bowlers instead of spinners, as this is what the pitch says in the first game. And let's have a hear from you about Sindh. Saad Khan gets another go. Asif Mahmood also included in today's playing 11. Yeah, it's forced change for Anwar Ali and also for Umair bin Yusuf. Seems like a really good side, and especially with Sharjeel up top and Saim, they are the key. Had a big win yesterday, Sindh, by 9 wickets, courtesy 107 not out from Sharjeel right in the centre right there. He was dropped 3 times, yes, but that's something, not the batsman's fault. And the fielding side did really pay heavily for it yesterday. This pitch, it always spoke to Tayyab Tahir at the post-match presentation, and he said it's a bit too paced. And some balls are keeping low, some balls are like getting a sharp rise. And that made it difficult for him to make shot selection. That's according to him. He was out there in the middle, got 41, so I'll take his word. But what do you make of it from this distance? We saw 106.
And then you talk about the side chasing also losing wickets. They were losing because probably, yes, they wanted to better their net run rate, but a total of 16 wickets falling and just 200 runs overall scored. Early on when I went down there, it looked like a decent surface. Yes, some cracks were opening up. There was some live grass, but I did not expect that it turned out that difficult for the batters. Again, I kept on saying that there are runs. They just need to be aware of where they're playing their shots, how far their bat is traveling. We've seen the batters who have waited for the ball got runs. Shahzada Farhan, he's another one who loves to dominate. He allows the ball to come near him. Under lights, I think it might be a little bit better surface that we witnessed in the first game. But swing, it's there, and he's one to exploit that. Sohail Khan. All set for the first ball of match 24, where Sindh won the toss and decided to bowl first. Sohail Khan is ready at the top of his mark. One slip, that's Sharjeel. Regulation, deep square leg, and third man, the men outside. In a part of the bat, and KP are off the mark with a single. Just look at the field positions out here, and I'll tell you what, Marina, keeping this wicket in mind, Haris is on strike. You keep an eye on that fielder at mid-on. Who is at mid-on? You are going to get the ball coming your way very soon when Haris is on strike. Asif Mahmood at mid-on. See, it came to you. I told you. He has developed that tendency. The first couple of deliveries he faced, always trying to enforce that shot towards the mid-on area. Upish, quite a bit time. Now they have switched it. But there's one area where you can plan to get him out early. He'll always take the chance. Asif Mahmood has swapped that mid-on position with Zahid Mahmood. Now Zahid is at mid-on. KP has had 2 losses. Yesterday's game was a close finish. Just like every team, there is a batsman that the side relies on for a good start, and Sahibzada Farhan is for KP. They lost that game by 6 runs, but he's been performing consistently up the order. And they'll expect no different from him today. Spoke to Khalid Mahmood earlier. He was quite disappointed with the 2 losses. He was quite disappointed with the way they lost the game yesterday. He was out there with the bat, wanted to finish the game. Eventually was forced to say, which evil eye has hit us that we just not winning. I wanted to introduce him to that evil eye, but that evil eye was too far away at that time. I wonder if you had done that, what his reaction would have been. Shot and gone through. Oh, that is really unacceptable. And why would Sohail Khan like it? Who was there? The culprit of the moment? Who was it? Very astute effort. It's no way acceptable. Just straight to him. He was so late on it. Faraz Ali. That's not acceptable at any level. Very casual attempt. He's furious and has every right to be. Again, another shift in the field. Saim Ayub now taking control of that cover area.
Every position is a key position. So removing somebody from one particular place and swapping it with another, what's the guarantee of that swap place? But yes, you probably feel that the strength of a particular batter in a certain area, it should be guarded by a good fielder. Yeah, I'll agree with that. That's the boundary. He's just dived all over it. Surely a very ordinary effort, that. Slow to move. Upish and clear the 30-yard circle. Boundary, one bounce. First one for KP. First sign of aggression from Farhan. He'll always make those deliveries count in his run. Just outside off stump, half volley. Easy to approach. Sohail Khan just again looking for that swing, pitching it up. But the width, that's where he miscalculated Farhan. Through the line, glorious. First gone. Khyber Pakhtunkhwa 11 without loss. Center. Left him over. Mir Hamza will have the new ball from the Waqar Yunus enclosure. 49th match for him. 4 for 9 is best. That's amazing figures, though. Economy is good as well. Just around 8. Slip is there. Good attacking cricket. Upish. He didn't intend to play in that region. He was aiming for the onside. Haris. Early on, he has that bottom hand domination. Again, just a wild flip of the bat. Never seemed in control whenever he faces few deliveries. These are chances where you can just set up a trap for him, because he will go after you, that's for sure. But keeping that slip in check. Mir Hamza, he'll enjoy these conditions. Can swing the ball both ways. Squared up. Both the batters have been squared up. Closing the face of the bat. Getting those leading edge down to third man. Khyber Pakhtunkhwa, they had the winning streak, but 2 consecutive losses against Central Punjab and Northern. Had been dominating ever since. They need to forget these 2 matches. They have all the resources. Need to realize that they've got opportunity to grab. Any mess up can mess things up. Upish, but won't travel to the fielder. Again, not convincing Haris. Not getting hold of the deliveries coming on his way. You remember yesterday you and I were on the stint here and we were talking about Haris. You feel that he's going hard at the ball. He's trying to reach for it. See, the second time around, he's tried to work it onto the onside. Not a flashy shot, but just to work it on the onside. And this ball is just moved slightly away from the bat and has taken that outer edge. It's not the first time. This is more like a premeditated attempt that he wants to play on that region. Is much better. Quick single. As a batter, you do have few getaway shots where you feel like if you play early on those shots, you feel more in control. You think that, yes, you have gotten hold of your form, you're middling it, you're hitting those favorite areas. But I'm not sure, as an opener, going across the line against the swing is a good option. There'll always be few shots where you like to dominate. I think that's the case with Haris. When he's confidently playing those on drives, he seems like in a totally different zone. But early on, you have to be careful. Slip coming out. Slip's been removed, yes.
taken a mid-wicket, a short mid-wicket. Sharjeel is the one who's moved in that zone. Not very convinced, Haris, is he, with the shots? He's been wanting to play and the ball has been going in other regions. As a batter, you need that feel-good factor, the feel of ball coming onto the bat nicely. Every delivery's gone for a single. Inside edge, so has this one. Very frustrating for a bowler when you get 6 singles. You'd rather go for a maximum and 6 dots, 5 dots rather. 17 for Nolas. People are coming in small numbers, but they are here to watch the game. Under lights is much easier, much cooler out there. I'll go for a single. You know, you just see Sohail Khan bowling. While in his delivery stride, he dropped that white towel. It can distract the batter. When something drops off your pocket or something, it just distracts you for a moment. There you go. It just drops. I'm surprised that he didn't pull out Farhan. And he has the right to pull out. It's a big towel, same color. Asking for something. Something has brushed. Maybe the trouser. Yeah, adamant, persistent, pleading. Add begging to that. They all went up straight away, Sarfaraz, and then everyone joined him. So did Sohail Khan, but couldn't really convince. Let's have a look. What did it brush? They're saying glove. This is nowhere close to the thigh. Yeah, it isn't. There's a clear sound there. There's a clear fraction of a sound there. Umpire didn't pick it up. Can happen in the heat of the moment. You can miss something out. It's better than you're not sure. Don't give it. Oh, misfield again. Sohail is not happy. It's just about the fielder taking their eyes off just for a moment, and that results in a single. There's something about these night matches, I don't know what it is. The fielders seem very complacent. Oh, he couldn't really touch the turn. And he's very angry. I don't know what they're doing. Sindh is a decent fielding side. They need to keep this pressure on. What's your call on that? The big loud appeal by all of them. Did you hear anything? I did, and it looked like it might be brushing the glove, but quite far away from here. Let's have a look again. Had that deviation as well. That's why everyone was convinced, and rightly so. You said it was far away from the thigh. Good bowling. Sohail Khan is a good bowler. He has the art of swinging it both ways. He thinks, he sets the batter up. But the only thing is when somebody misfields, then he just loses the focus for a moment.
I just heard Sarfaraz telling him, you didn't get that wicket. There's been a misfield. Agreed. Keep your focus on. Because if you don't focus, then you go for runs. And that's rubbing salt into your wounds. Yeah, he's slogging it, isn't he, Haris? We see that again in the next over. It's 20 for no loss. $20 for no loss. 3 overs gone. Happy to see themselves on the big screen. Let's have a look at the last ball. Tell me about this shot. Again, just trying to slog it. Whenever he sees length or something short of it, his bottom hand dominates, and that seems like to be his only focus, slamming everything into the leg side. He's not reading it well. He's not learning from his mistakes. You can set him up very easily. My favorite is here. Rahar Ahmed, he's such a good bowler. Like I said yesterday, so eager. Wants a wicket every delivery. And why not? And like it when he actually gets some very senior guys into the game, searching for the turn. He's always the trump card. Mystery spinner. In the air, just over point. Chase given by Saad, and it goes for 4. You see his reaction. He's not happy. He put everything in it. The fielder, poor guy. Oh, you have to feel for it. Sarfaraz was sure that it was a catch. Just had enough wood on it to travel it all the way to the boundary. It's a quick outfield. And once it just plucked into the ground, it kept on traveling away from Saad. Not a good technique to dive, though. He doesn't care. What are you doing? Very well bowled, yeah. I told you I like him. This taskmaster, he just wants a wicket every ball. Bowlers are never happy with the field efforts, with anyone. Very well bowled. He thinks a lot. He's quick on his feet, sees the batter where they're going. Just like evidence of that is the previous ball. Farhan coming down, he just bowls it a little quicker, changes the length, adjusts rapidly. And he sets you up. Bowls a couple of them coming into you, and then he'll bowl one that goes the other way or holds its line. There. This will be a good battle. Ibrar against Haris, looking everything to slog into the leg side. He's quick. It's never easy to put those away. You have to be very careful going on to the back foot. Four gone, 26 for no loss. हम कह सकते हैं कि यूं ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, लोग खेल देखने के लिए आएंगे, ख़ास तौर पर मुल्तान की शामों में जहां पर कम फ्लड लाइट्स क्रिकेट मैचेस होते हैं।
बोल्ड कर दिया, विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का सिला, ये नीचे रह गई और लेग साइड में जल्दी हिट करने चले गए हारिस। यहाँ गलत शॉट का इंतखाब किया यहाँ पे हारिस ने, क्योंकि सोहेल खान बहुत शानदार लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और ये शॉट ये समझ से बालातर है, क्योंकि इतना आसान पिच नहीं है कि आप आसानी से आइए और अपने मर्जी के शॉट मारिए। और ऐसे बॉलर जिनके पास बहुत सारा तजुर्बा मौजूद है, उनके लिए ऐसा शॉट खेलना तो गुनाह है। 6 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने, 26 पर 1 केपी। कामरान गुलाम जो खैबर पख्तूनख्वा के सबसे प्रोलिफिक बैट्समैन साबित हुए हैं पिछले 3 बरस से, वो मैदान में उतरे हैं। इस वक्त मिडल का गार्ड ले रहे हैं, मिडल स्टंप का। सोहेल खान की स्विंग को ताकि कोप कर सकें। आज दोनों ही बॉलर्स मीर हमजा और सोहेल खान एक गेंद को मूव कराने में कामयाब हुए हैं कल की तरह। और तीसरा ओवर कराने का फैसला अली ये अच्छा साबित हुआ कप्तान की जानिब से। कम होता है कि आप अपने फास्ट बॉलर से मुसलसल 3 ओवर्स करा दें पावर प्ले में। जी और उनको सिला मिला इस चीज़ का, बड़ी विकेट हासिल की है हारिस की और अच्छी मूव है ये। हमने देखा कि चेंजेस भी अच्छी हैं सिंध की साइड पे, अपने फास्ट बॉलर के साथ गए। अनवर अली को बिठाना इतना आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने परसिस्ट किया कि आसिफ महमूद को खिलाएंगे। इनफैक्ट हमें अभी बताया गया कि वो फिट नहीं है, जिस वजह से वो खेल नहीं रहे हैं। हम बहुत जोर से ना कह दी साहबजादा फरहान को, जो पर तोड़ रहे थे रन बनाने के लिए। ये एक ऐसी पिच है जहां पर आपको कुछ देखभाल कर खेलना पड़ता है, आपको थोड़ा नजर लगानी पड़ती है अपने स्ट्रोक खेलने से पहले। अब तक अच्छा टूर्नामेंट गुजरा, एक मिस सेंचुरी बनाई है, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 39 रन की इनिंग्स खेली थी। ज्यादा बड़े स्कोर खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं बनाए हैं, लेकिन उनके बॉलर्स काम करते रहे, उनके बैट्समैन जरूरी रन्स बनाते रहे। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में ऐसा लगा कि थोड़ा रास्ता भटक से गए हैं, क्योंकि 2 मैचेस हार गए हैं ऊपर तले। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस एंड की तरफ आ रहे हैं और इस तरीके से अगर आप मैच हार जाएंगे तो गोइंग फर्दर सेमीफाइनल फाइनल के लिए। ये कामरान गुलाम 110 रन बनाए थे 2021 में जब लास्ट टाइम मुल्तान में खेलने आए थे। बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं, बहुत ही कमाल फॉर्म में हैं और जिस तरीके से शॉट मारते हैं, कदमों का इस्तेमाल भी कमाल का करते हैं। नॉर्दर्न के खिलाफ तो ये हमेशा ही रन्स करते हैं, बड़े शॉट मारते हैं, अपनी बारी को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी विकेट को, और जब मौका मिलता है तो बड़े बड़े छक्के मारते हैं। ये कमाल के प्लेयर हैं। यहाँ ये उनकी लाहौर की सेंचुरी की याद थी जो पिछले बरस अक्टूबर में उन्होंने बनाई थी नॉर्दर्न के खिलाफ। इनको रावलपिंडी का जो मरहला था 2021 के सीजन में, वहाँ मौके नहीं मिले थे। सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा की टीम में, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद। तो जब ये रिजवान अहमद, मोहम्मद रिजवान भी खेल रहे थे पिंडी में, मगर लाहौर आए, सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप के कैंप में चले गए थे और उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना। कामरान ने वहाँ सेंचुरी बना दी और T20 में भी अपनी आमद का ऐलान कर दिया। इस ओवर की पहली और आखिरी गेंद नीची रही, फर्क सिर्फ विकेट का था, 28 पर 1।
तो आज ओवर्स की जो तकसीम है वो कैसी हो गई, क्योंकि अनवर अली नहीं है जो आकर मिडल ओवर्स में बॉलिंग का बार अपने कंधों पर लेते हैं। साहबजादा फरहान यहाँ पर अच्छा खेल रहे हैं। आज 19 रन अब तक बना चुके हैं 3 चौकों की मदद से। फ्रंट फुट पर उन्होंने अच्छे शॉट खेले, स्विंग होती हुई गेंदों को ऑफ साइड में, लेकिन स्पिनर्स से पाला पड़ा। अच्छा साइन है कि 5 बॉलर्स के साथ गए हैं सिंध की साइड, 5 प्रॉपर बॉलर खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट बॉल घुस गया था विकेट्स के अंदर। यहाँ बहुत लकी रहे हैं साहबजादा फरहान। सिंध की साइड की बात करें, 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ उतरे हैं। सोहेल खान, मीर हमजा हैं, आसिफ महमूद के साथ आए, वापसी हुई है उनकी, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मुझे लगा वो इस पिच पे अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी तक देखा है ये कुछ पैचेस ऐसे हैं इस पिच के ऊपर जहाँ पे बॉल पड़ के लो रह रहा है और थोड़ा फंस भी रहा है, इसीलिए फास्ट बॉलर्स को बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस पिच पे, इसीलिए शायद आसिफ महमूद की वापसी हुई है। ये तेज बॉलर हैं और इस पिच पर अगर आप विकेटों में गेंद करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन की जो टेक्निक है उसकी भी आजमाइश रहेगी। हमा वक्त पहला मैच बिल्कुल लो स्कोरिंग था और विकेटें मुसलसल गिरती रहीं। बमुश्किल एक बैट्समैन तैयब ताहिर जो हैं वो 40 के पेटे में दाखिल हो सके। मिस सेंचुरी एक भी नहीं बनी। ये आराम से बहुत अच्छे यार, वो आप पहले जो आप बात करें वो आप देख चुके हैं कि मोहम्मद हारिस जिस तरीके से आउट हुए हैं, टेक्निक की आपने बात की, और ये टेक्निक बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिच उस तरीके का नहीं है जहाँ पे फ्री फ्लंट शॉट लग रहे हैं। बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन लकी रहे हैं कि बॉल गैप में चला गया 4 रन के लिए। यहाँ फॉलो करने की कोशिश की थी अबरार अहमद ने और इन्होंने हिट लगाने की कोशिश की, मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग करने के लिए गए, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर ज्यादा लगी और हालांकि रास्ता अलग था लेकिन मंजिल वही थी जो चाहते थे साहबजादा फरहान। अक्सर देखा गया फास्ट बॉलर को ये फ्रंट फुट पर इन दिनों खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स को ज्यादातर बैक फुट पर खेलते हैं या फिर स्लॉग स्वीप करने चले जाते हैं। एक और चौका, इस बार ये जोर का स्वीप था, फील्डर स्क्वायर के सामने थे और गेंद बिल्कुल अंपायर के पीछे गई। शायद उनको अंदाजा हो गया कि जोरदार शॉट ही मारना पड़ेगा, एक बार फिर फोर्स करना चाहते थे इस शॉट को। टाइमिंग मौजूद नहीं थी लेकिन एक बार फिर खुशकिस्मत रहे कि बॉल गैप में चला गया और 4 रन हासिल किए। परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए सिंध को, क्योंकि इस बॉल पे कोई भी, इस पिच पे कोई भी बॉल नीचा रह सकता है, सिर्फ उस पैच पे बॉल मारने की देर है। रीड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बैकफुट पर खेल रहे थे इससे पहले अबरार को पिछले ओवर में, और फिर उसका हल ये निकाला कि स्वीप किया जाए, जो कि अक्सर होता है जब बैट्समैन हाथ से स्पिनर को ना समझ पा रहा हो। बहरहाल अच्छा ओवर ये केपी के लिए 11 रन के साथ 39 पर 1। मुल्तान में नेशनल T20 कप की वापसी हुई है 2 बरस के बाद। 2020 में आखिरी बार यहाँ टूर्नामेंट का पहला मरहला हुआ था। इस बार सेमीफाइनल्स और फाइनल की मेज़बानी मिली है इस सदर्न पंजाब के टेस्ट सेंटर को, और इस साल बहुत क्रिकेट मुल्तान में आ रही है। इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए आएगी मौसम सरमा में। बेहतरीन बॉलिंग है मीर हमजा की जानिब से। अगर आप इस पिच पे विकेट टू विकेट बॉल करते रहेंगे तो आपको कामयाबी हासिल होगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये पिच ऐसा नहीं है कि फ्री फ्लंट शॉट लगे हों। यहाँ पे पावर प्ले अच्छा रहा है दोनों साइड्स के लिए, मैं कहूँगा दोनों खुश होंगे, क्योंकि शुरू में बाउंड्रीज हासिल की थी केपी ने, ऑल्दो बहुत जोरदार हिट मारने गए थे, लेकिन खुशकिस्मत रहे। ये खराब शॉट
और काफ़ी कुछ सोचना होगा हारिस को इस शॉट के बारे में, अपनी टेक्निक को लेके इस पिच पे अगर उन्होंने कामयाब होना है तो। सबज़्यादा फरहान को लंबी इनिंग खेलनी होगी यहाँ पे। 6 ओवर्स में 39 रन बने, 1 विकेट गवाई हारिस की। और अगर सबज़्यादा फरहान जैसे प्लेयर लंबी इनिंग खेलते हैं तो आप 160-170 तक पहुँच सकेंगे, इतनी मुश्किल विकेट भी नहीं है। लेकिन अगर आप ख़राब शॉट्स मारते रहेंगे, अपनी विकेट को वैल्यू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली रन नहीं होंगे। अच्छा शॉट, लेकिन उतनी आला फील्डिंग भी। कवर पोजीशन पर पूरी तरह मुस्तैद थे साइम अयूब, जो गन फील्डर्स में शुमार किए जाते हैं सिंध के। और ये जो 39 रन आज स्कोर किए हैं खैबर पख्तूनख्वा ने, ये बेहतरीन स्कोर है इस फ्लड लाइट्स के मरहले का। फ्लड लाइट्स में ये बेहतरीन स्कोर है पावर प्ले में जो किसी टीम ने बनाया है। इससे पहले ज़्यादा रन नहीं बन पा रहे थे। इंटेंसिटी अच्छी है सिंध की साइड की, जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी हमने ऐसा देखा था कि जब आप फील्ड में उतरे थे तो एक एफर्ट नजर आई थी हमें, जैसे वो जीतना चाहते हैं हर मैच यहाँ से, क्योंकि बिजनेस एंड की तरफ आ रहे हैं, टेबल के 2nd नंबर पे आ गए हैं और अच्छे टाइम पे मोमेंटम हासिल कर लिया इनकी टीम ने। तो खुश होंगे साउद शकील एज अ कैप्टन, पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं इस लेवल पे और अच्छी कप्तानी की है, अच्छे चेंजेस किए हैं टीम में। स्पेशली इस मैच की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच अपनी टीम खिलाई है। पुल करना चाहते थे, गेंद स्किड होकर आई, ये शॉट मुश्किल हो जाता है। इससे पहले फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको मौका नहीं दे रहे थे मीर हमजा। यहाँ पावर प्ले की अगर बात करें तो सिंध ने जो स्कोर किए हैं वो 54 है और जो दिए हैं वो 44 हैं, तो डिफरेंस जो है वो 10 रन का है। तो इसका मतलब है कि आप जब उनके जो ओपनर्स हैं वो रन्स करते हैं ज़्यादा तेज़ी से, उसकी बड़ी वजह शर्जील खान है, जिस तरीके से उन्होंने कल बैटिंग की। और अगर वो पावर प्ले में खड़े हो जाते हैं तो आई एम श्योर इस 54 रन से काफ़ी ज़्यादा रन हो जाते हैं। आला फील्डिंग, सुहेल खान वो दाद के हकदार हैं, ये यकीनी तौर पर 4 रन से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पोजीशन है। आमतौर पर फील्डर को उस वक्त अंदाजा होता है जब गेंद आपके बिल्कुल पास पहुंच जाती है, या फिर तब अंदाजा होता है जब बॉल आके हाथ में फंस जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ है शायद, क्योंकि बहुत तेजी से ही बॉल गया था। लेकिन दाद देनी होगी इस एफर्ट की, इस इंटेंसिटी की जो सिंध के सीनियर प्रोज दिखा रहे हैं। देखिए काफी तेजी से मिडिल ऑफ द बैट लगा था और यहाँ खुशकिस्मत रहे कि बॉल फंस गया। बहुत ही शानदार एफर्ट सोहेल खान की जानिब से। 7 ओवर्स के बाद 39 पर 1 केपी। मीर हमजा का मेडन ओवर रहा, उसके बाद जायद महमूद की अब बारी है। अपनी लेग स्पिन गूगली बॉलिंग का जादू जगा सकें। 75 विकेटें इनके नाम पर पहले ही हैं, 5 विकेटें भी ली हुई हैं एक इनिंग्स में। तो आमतौर पर जब एक आध ओवर बैट्समैन खामोश रहे या मेडन ओवर गुजरे T20 में, फिर अगला जो है वो ओवर अलर्ट होता है। तो इस ओवर में जरूर कुछ हो सकता है, बैट्समैन जा सकते हैं ऑल आउट अटैक पर। और ये सिंध का जो 10 रन का फर्क आ रहा है अली, इसकी जो बड़ी वजह है, एक तो साइम अयूब हैं और शर्जील खान, और दूसरा बॉलिंग में जो इन्होंने कम रन दिए हैं औसतन, उसकी वजह इनके बॉलर्स का गेंद को स्विंग करना है, उस पर रन होते नहीं है। यहाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, एक्सपीरियंस है। मीर हमजा की बात करें, जैसे आपने कहा वो स्विंग करते हैं, सोहेल खान भी स्विंग करते हैं, लेकिन उनके पास इतना तजुर्बा मौजूद है कि वो किसी भी कंडीशंस में अच्छे बॉल करते हैं। आज भी जिस तरीके से बॉलिंग की है, अभी मीर हमजा ने मिडन ओवर किया है।
2 रन की कोशिश होगी, यहाँ पे अच्छी रनिंग करनी होगी। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से वापस पहुंच गए। डायरेक्ट थ्रो होती तो शायद मामला खतरनाक हो सकता था। जी हाँ, ये बिल्कुल खतरनाक होता, ये पीछे रह जाते। साहबजादा फरहान जो हैं थोड़ा सा सहल पसंदी का शिकार हुए और फराज अली फील्डर ये देखिए ज्यादा बैकअप कर नहीं रहे थे और इसलिए आखिर में बड़ी मुश्किल हो जाती। देखिए अभी भी ये बैकअप कर नहीं रहे। T20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है। अगर हम देख सकते हैं साहबजादा फरहान को, जब ये पिछली 2 गेंदें हुई हैं, ये अपनी क्रीज के असीर रहते हैं। बहुत जरूरी है कि जब आप नॉन स्ट्राइकर हैं, आप बॉलर की लेंथ पर नजर रखें। अगर फुल लेंथ है तो फिर अपनी क्रीज में ही रहिए, जैसा कि इस बार था। लेकिन अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ है तो फिर आप जा सकते हैं आगे, क्योंकि फिर वो गेंद स्क्वायर ही जाएगी, आपकी तरफ नहीं आएगी। यहाँ बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही आप ऑस्ट्रेलियन पिच पे खेल रहे हो और बैक फुट पे पंच लगे, लेकिन यहाँ पिचेस पे आपने बिल्कुल दुरुस्त का अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। यहाँ पे साहबजादा फरहान 30 रन पर मौजूद हैं। लंबी इनिंग खेलनी होगी और रिविजिट करना होगा शायद जो प्लान शुरू में लेके आए हैं किस पिच को देखते हुए। अच्छा ओवर, जाहिद महमूद की नपीतुली बॉलिंग, दबाव बरकरार रखा हुआ है सिंध ने अभी तक केपी पर 44 पर 1। Today has been the bowler's day. Run making has been difficult, even under lights. KP batters have found it difficult, but they haven't given it away. Sohail Khan 1 for 14. Mir Hamza probably bowled the first maiden of this championship. 2 spinners also had a chance to be part of action. But I think it's Asif Mahmood. It'll be interesting to see how he goes. He's quite tall, high arm action. Sohail Khan also bowled from the top end. And this is where Asif Mahmood is going to start operating. Sides playing the second game in the day have the advantage of watching what's happened in the first game. And I'm very sure that they decide accordingly what 11 they want to take to the ground today. Which is why you see that spinners have not really been of big demand, especially if you talk about KP. They have the options, yes. It's more about seamers, unless you have a mystery spinner. Should be 2. He's hit it too well, actually. And to the left of Mir Hamza. He's a left-handed fielder. It's quite a contrast in the 2 teams, the way they've done their selection. KPK went with 4 fast bowlers. Khalid Usman, the all-rounder. But on the other side, Sindh has got 3 seamers and 2 spinners. Quick run. Sometimes we have certain stats that you look at them, maybe they don't have any value on or impact on the game directly. But every time Sahibzada Farhan scores, KP wins. And that's because he's up the order. Kingdom Valley, you can log on to their official Facebook page and win exciting prizes. And be the next winner. Go on and log on. He's cleared that field. There will be a boundary. It's one of the boundary options if you got good stroke play with the horizontal bat. And Sahibzada Farhan, who's got his eye in,
And now he can capitalize. Wasn't in complete control. It got a little big on him, but enough bat to hit it well in front of square. Making point about Sabzada Farhan. He's a stalwart for KP in domestic cricket. Got a hand to it. That's what's taken the pace off, or else it was surely a boundary. It's not the first time Faraz has missed fielder, but I'd say he's made a good stop. But at this level, you want it to be a perfect stop. Shouldn't be a single. The full toss deserved a lot more. So Asif can count himself lucky. In fact, it was Danish Aziz, substitute fielder. Let's figure out who's off the park. You're wide. No, it's so important for your fielders. The bowler needs that batting. You stop a certain shot, stop them from taking a single. You build that pressure, and that's where the bowler cashes out on. Absolutely, you have to support your bowlers in the field. Sabzada Farhan's innings is crucial. Single to finish off the over. 9 gone, 54 for 1. It's pretty hot. You can do with some ice cream. It's a few scoops, not just the one. Almonds. More of the same, please. That chocolate dripping is probably favorite for Sikandar. You big chocolate fan? As in chocolate or chocolate ice cream? Chocolate ice cream. I like ice cream, brings out the kid in you. But it's been a while. It'll be nice in this weather though. In any weather actually. And it's gone. Missed everybody. That's a perfect leg spinner. 4. It's been concentrating more on googlies in this championship, but this was a real leg spinner. He really gave it a rip. Did grip on the surface. Look at that flight. Delicious piece of flight, and the turn and grip. That look of disgust. Did hit Kamran Ghulam on the thigh. He's in fact given as runs, so probably got something on the way as well. Yeah, there was a huge deflection that beat Sarfraz. That's a boundary. That's a good thing. Rub salt in wounds. You attack the bowler who's just bowled a perfect delivery and gone for a 4. This is where Kamran Ghulam staying one step ahead of the bowler. Just faced a perfect leg spinner. He preempted that Zahid will give him another flighted delivery, which was the case. Opened up the offside a little bit, gave himself some room. But all along the ground, Kamran Ghulam is an excellent player of spin. Well done, Saud. Very well done. Very well done, Saud. Watch. Yeah, Zahid. Yeah, Zahid. Like we were saying, the composition of Sindh team, they have 2 spinners. This kind of surface, fast bowlers have been difficult to get away. Oh, yeah, the wrong one. Didn't read it. Didn't read it. That was wrong one, but that too was flighted. He's been bowling quick wrong ones in this tournament, bringing out all his repertoire. Team needs a breakthrough, that's for sure. It's not your classic 180 runs wicket, so runs are very important. And you feel KP has built a nice platform, something that we didn't see in the first game. It got the edge and just flicked the back leg along the way. Another googly to finish off the over. Good one for KP. Zahid is not happy.
at the halfway stage. KP 63 for 1. Harish lost his wicket early, but this is a crucial partnership. Propelling KP to 63. Having seen 2.5 innings on this pitch, Sikandar, what do you reckon should be a good competitive total here? Anything around 160. It's not too less, it's not too much. It's just around that area where you can fancy your chances. If you bowl well, you can put them in trouble. It's not the ideal wicket where you get a boundary every over, 2 every over, and reach those 180 marks. This partnership is almost run a ball. What I like is their intent. They're running quick between the wickets. They know if the big hits won't come, they need to keep rotating the strike, keep adding those runs, and every run will have to be hard-fought runs in the chase. I'll tell you that much right now. You make a good point. What's good to see is that KP seems to have a method. They've realized very early. I was talking to Abdur Rahman, their coach, before the start of the game. He did mention that this pitch is not a 106 pitch which were scored in the first game. Wow. Chance or no? No. For a moment you thought Saim Ayub was in the game. Made a nice crack as that ball hit Sabzada Farhan's bat. These are long boundaries. Saim Ayub got back, and the jump wasn't enough to bring the ball back into play. This will be a good picture. Look at the anticipation. Took a step forward and then back. Absolutely sensational. That I find very tough to absorb when you take singles inside the 30-yard circle. You've got 3-4 men guarding. They're there to save one. And you got to anticipate what's really happening. If they're dropping the bat and taking singles, you got to come in a little bit. At the same time, Sikandar, if you look, you have to give credit to the batters. At the last minute, just turn the face of the bat and deceive the oncoming fielder. He's still eyeing that mid-wicket zone. He knows there's a fielder in the deep. Taking his chances. 11 gone, 73 for 1.
Decent crowd again tonight. Second day of cricket under lights in this year's Kingdom Valley National T20 Cup. Crowds of all ages. We hope to see more and more people come, because this tournament is really hotting up. Teams are really close in for the fight for the semi-finals. Every game is vitally important, and this atmosphere will really push players to produce their best. He's in the air, will take some catching. 2 under it, don't mess it up. Nicely done. Reverse cup. Faraz takes the catch, and Zahid Mahmood wanted a wicket desperately. He was quite frustrated in the previous over. And Sahibzada Farhan walks. This is a top catch. Absolutely top class, because they stayed in the air for quite a long time. The slog sweep, a bit of a top edge. And Faraz had time to steady, but he had to keep an eye on Saim Ayub as well. Oncoming Saim Ayub. He made the call loud and clear. Zahid celebrates. Crucial man. Farhan was well set. Gone for 44. KP 73 for 2. Adil, the new batter in. Keep watching how every single batter coming from KP puts in their part. 20, quick fire, 30. It's in the air, should be out. Back-to-back wickets, that changes everything now. Danish Aziz takes the catch. 2 set batters are back in the dugout. This changes everything. Also, the captain pokes Zahid Mahmood in the eye. Well, this is huge. 2 set batters losing their wickets. Kamran Ghulam once again giving himself some room. This time, too much room. Could barely reach the ball, and Danish Aziz takes an easy catch. Zahid Mahmood is delighted. Skipper South is poking him, but he will take this moment of glory for himself. 2 and 2. Kamran Ghulam walks back for 19. KP 73 for 3. Amir Azmat, the new man in, come back into the squad, or the playing 11 rather, at the expense of Israrullah. Just in the last over, saying that this wicket is supporting quicker men better than the spinners. Well, what do we know? Zahid Mahmood has come and make a telling contribution. Hat-trick ball. Strike rate of 122 for Amir Azmat, just the 14 games. 6 hat-tricks already in the National T20 Cup. Here we go. Back-to-back wickets. Sahibzada Farhan first. Good catch taken by Faraz. Down at wide, long on. And then here we go. Kamran Ghulam. Danish Aziz takes the catch. Changes the whole complexion of the game in a span of 2 deliveries.
Two set batters back. Got to rebuild now, KP. Never ideal in a T20 game when you have two batters starting off. Two after the halfway stage, it means that that projected score, whatever they had in mind, it has to come down. Courtesy those 2 wickets. Shout, shout. It's got some bat on it, has he? Or probably going down. Zahid feels that way as well. So does the umpire. It's a very eventful over, I tell you that much. It was a googly. Sahil Mahmood really on the charge. End of a successful over. 2 wickets. 2 runs of it. In fact, 3. 75 for 3 after 12. Bowling change right now over. शाबाश शाबाश शाबाश. साइम अयूब जो छठे बॉलर हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ शॉट खेलना आसान नहीं, और यहाँ ये दूसरा रन बिल्कुल आसान नहीं था और सरफराज ने लगता ये कि काम तमाम कर दिया. आदिल अमीन मुश्किल में है, तजस्सुस है इस वक्त उनकी निगाहों में. यहाँ बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है जैसे विकेट हासिल कर लिए सिंध ने. एक तो विकेट मुश्किल, ऊपर से अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते हुए ऐसी रनिंग से केपी की साइड. जी हाँ, शायद ये करीबी मामला है. यहाँ लगता ये कि इनका जो बल्ला है, आप देख सकते हैं कि ऑन द लाइन है जिस वक्त ये डिस्टर्ब हो रही हैं बेल्स. इन बिटवीन एक फ्रेम की ज़रूरत होगी, लेकिन ये बहुत खुश नसीब होंगे अगर यहाँ से बच के निकल गए. आदिल अमीन, हाँ ये बहुत ही 19-20 है या उससे भी ज़्यादा करीब है. ऐसे मौके पे होता है कि शुक्र है हम अंपायर नहीं है, थर्ड अंपायर. या शायद ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि डबल माइंडेड थे, आप क्लियर नहीं थे, तो जो डाउट है वो बैटर को ही जाना चाहिए. शोजेब रजा टीवी अंपायर थे, उन्होंने आदिल अमीन को शक का फायदा दिया, लेकिन अच्छी थ्रो थी. सरफराज अहमद ने बड़ी फुर्ती के साथ अपना काम किया. बहुत मुश्किल हो जाती खैबर पख्तूनख्वा के लिए अगर आदिल अमीन को वापस जाना पड़ता. अयाम रज़मत को उनको बैटिंग ऑर्डर में आज प्रमोशन मिली है, नंबर 4 पर खेलने आए हैं, हिटर के तौर पर जाने जाते हैं. देखिए गेंद तेजी के साथ गई थी. यहाँ देखिए झिझक का मुजाहरा किया, पसो पेश से काम लिया वापस जाने में, और उसी वजह से ये तकरीबन पीछे रह गए थे. यहाँ बहुत लेट डिसाइड किया कि दूसरा रन लेना चाहते हैं और यही कंफ्यूजन पैदा हुई. बाल बाल बचे क्योंकि यहाँ पे अगर आदिल अमीन आउट हो जाते हैं तो मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी केपी की साइड के लिए. 3 विकेट्स ऑलरेडी गवा चुके हैं, ऑल्दो अभी सरवर को आना है, खालिद उस्मान को आना है, लेकिन इनका रहना जरूरी है. अच्छा शॉट खेलकर 1 रन बनाया. कल हमने देखा था कि जो शाम का मैच था उसमें जो आखिरी मरहला था, आखिरी जो 5-6 ओवर से, उसमें गेंद बेहतर बल्ले पर आने लगी थी और फिर दूसरी इनिंग्स में तो बिल्कुल ही बैटिंग का खेल हो गया था. शर्जील ने सेंचुरी बना दी थी. क्या आज भी ऐसा होगा? आज बादल बिल्कुल नहीं है आसमान में. यहाँ पे एक और चांस हो सकता है, थोड़ा जल्दी करनी चाहिए थी यहाँ पे साइम अयूब को. कंफ्यूजन है, थोड़े मसाइल हैं केपी में. ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर फील कर रहे हैं. यहाँ पे रन नहीं मौजूद था और आदिल अमीन मारते ही भाग पड़े थे, और अच्छी थ्रो अगर होती
तो शायद हालात जो हैं वो मुख्तलिफ होते। अगर सरफराज पे जाएं, उनके शोर पे जाते तो शायद यही मुश्किलात थी। और शानदार शॉट खेला, बिल्कुल बॉलर की चोटी के ऊपर से ये 4। ये अच्छी चोट की आमिर अजमत ने, और यही उनकी शनाख्त है। बहुत ही शानदार कदमों का इस्तेमाल। आमिर अजमत का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन उभरते हुए बैटर्स में होता है, और यहाँ दिखाते हुए कि क्यों 13 ओवर्स के बाद 84 पर 3 केपी। लाला तैयार, लाला तो पकड़े रहना, बॉल आएगा यहाँ पे, यहाँ बॉल आएगा, तैयार है ना। अभी जाहिद महमूद को ही उनका चौथा ओवर सौंप दिया गया है। भाई बहुत ही उम्दा स्पेल किया है जाहिद ने, इनको हवा देते रहे हैं। जो दूसरे इनके स्पिनर हैं अबरार अहमद, मिस्ट्री स्पिनर, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। और जाहिद इसलिए भी ज़्यादा हवा दे रहे हैं यहाँ मुल्तान में पहुंचकर कि ये बाउंड्री बड़ी है, तो इसलिए स्पिनर्स खुश हो जाते हैं आमतौर पर जब बड़ी बाउंड्री देखते हैं इन दिनों। और फिर से दावत दी और तैयार थे हिट आउट करने के लिए। बुलंदो बाला छक्का लगाया आमिर ने। जहाँ बाउंड्री जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन जितनी जान आमिर अजमत में मौजूद है, उनके लिए इसको क्लियर करना कोई मसला नहीं है। देखिए अच्छे तरीके से पिक किया उन्होंने लाइन और लेंथ को, और ये उनकी सबसे फेवरेट शॉट है, मिड विकेट के एरिया के ऊपर से खेल दिया। बहुत जानदार शॉट है ये। जहाँ हो सकता है कि अब रफ्तार बढ़ाना पड़े इन्हें अपने बॉलिंग की। ये करता रहा यार, अच्छा खेला अगेंस्ट द टर्न और 1 रन हासिल किया। ये होम ग्राउंड भी है आमिर अजमत का। मुल्तान सुल्तान के ये उभरते हुए खिलाड़ी हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स में से हैं। देखिए अपनी रीच का फायदा उठाया और पूरे वसूख के साथ खेला था। 1 इंच भी हिले नहीं अपनी जगह से, जानते थे कि गेंद की मंजिल कहाँ है। यहाँ आखिरी 2 मैचेस नहीं खेले थे और केपी वही 2 मैचेस हार गया। यहाँ पे वो दिखाते हुए कि क्यों इस टीम का ये अहम हिस्सा है। गेंद के लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। अंपायर की मुस्कुराहट यही बता रही है। सरफराज का चेहरा तो हमेशा ही आउट के लिए तैयार रहता है। ऐसे लगा वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि बॉल बहुत बाहर पिच हुआ था। आज इस पिच की जो रंगत थी वो बिल्कुल कल जैसी थी, और लेकिन बाउंस का फर्क रहा, रफ्तार भी बहुत कम रही। हालांकि एक ही स्क्वायर पर पिचेस हैं, लेकिन रवैया रफ्तार बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, रंगत एक जैसी होने के बावजूद। आराम से अगले ओवर में बात करेंगे इस जिम्न में 93 पर 3। शायकीन क्रिकेट खास से खुश हैं मुल्तान में इन नामवर खिलाड़ियों को देखकर, और जो डेफ क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी हैं वो 1 से 9 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात वो खेलेंगे। DICC डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है। बहुत क्रिकेट हो रही है इन दिनों इमाराती सरजमीन पर। एशिया कप, उससे पहले वर्ल्ड कप खेला गया पिछले सीजन में। वापस आ गया है मीर हमजा को। पहले मीडिया सेंटर एंड से अपने 2 ओवर किए थे जिसमें 6 रन दिए, और अब पवेलियन एंड से आए। क्या रिवर्स स्विंग कर सकते हैं यहाँ? देखिए स्क्वायर तो बहुत ड्राई है,
अगले हमें ये नहीं मालूम है कि ड्यू कितनी है, क्योंकि ड्यू अगर हो तो फिर शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो हमें नज़र नहीं आई है। और मीर हमजा शायद उस तरीके से आइडली है भी नहीं। सोहेल खान से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से रिवर्स स्विंग कर सकेंगे अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी उनको मदद हासिल हुई तो। पहले यही होता था कि मीर हमजा जो है वो डेथ ओवर्स करते थे, आखिरी जो 4 ओवर्स होते थे उसमें 2 ओवर्स इनके रखे जाते थे। कटर का इस्तेमाल किया, ऑफ कटर मीर हमजा का, और अच्छा खेला भी आमिर अजमत ने। देखिए हर गेंद पर वो बल्ला स्विंग नहीं कर रहे आमिर अजमत, लेकिन गेंद को देखकर अपने करीब आने दे रहे हैं। यहाँ बहुत समझदारी से खेल रहे हैं, क्योंकि शायद उनको एहसास है कि ऐसा पिच नहीं है कि आप आएंगे और बड़े हिट मारेंगे। बुरे बॉल का वेट कर रहे हैं, जैसे आपने पिछले ओवर में देखा जाहिद महमूद का बॉल उनकी रेंज में था, उनके एरिया में था, और उन्होंने दिखाया कि वो बहुत जोरदार तरीके से हिट मार सकते हैं। यहाँ पे मुल्तान के जो स्पेक्टेटर्स हैं वो एंजॉय करते हुए, ये सिर्फ वार्म अप है, आगे बहुत क्रिकेट आने वाली है। बहुत मिठास है इस शहर की बोली में, इस शहर के खानों में। बमुश्किल इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेला आदिल अमीन ने, और अगर कोई लंबे कद का फील्डर होता तो वो क्या ही ले उड़ता। बहुत ही रिस्की शॉट था ये आदिल अमीन की जानिब से। उस तरीके से टाइम नहीं किया जितना वो चाहते थे। फिर थोड़ा बॉल लो रहा है, टो एंड पे लगा है, और लकी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि थोड़ा लंबे कद के फील्डर होते तो शायद उनके हाथ में चला जाता। डिसअपॉइंटेड होंगे ज़रूर मीर हमजा। बहुत ही कमाल का सीज़न रहा है ये मीर हमजा के लिए, और इस मैच में भी अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इस बार इनटू द पिच गेंद की थी मीर हमजा ने, जो कि मानवे बॉलर हैं, और यहाँ 100 रन खैबर पख्तूनख्वा ने अपने मुकम्मल किए हैं 14.4 ओवर्स में। दोनों टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। दोनों जो हैं वो इस वक्त चोटी पर हैं, पॉइंट्स टेबल पे भी। नहीं, बस फ़र्क मुझे ये लग रहा है कि सिंध ने मोमेंटम पकड़ लिया है और केपी ने मोमेंटम खो दिया है, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस हार गए हैं और सिंध आखिरी 3 मैचेस जीत के आ रहे हैं। तो बिजनेस एंड पे जब आए और टीम अगर फॉर्म खो जाए तो मुश्किलात हो जाएंगी आगे जाके। मीर हमजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड के फास्ट बॉलर हैं, बहुत देर से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और इनको देख के हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये हमेशा 100% देते हैं। रिजल्ट तो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश अगर आप 100% करेंगे तो वही आप एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे एथलीट माने जाते हैं। अच्छे प्रोफेशनल की भी यही निशानी है, मीर हमजा दिखा रहे हैं हर फॉर्मेट में। इस बार गेंद पल्ले पर बेहतर लगी, लेकिन पीछे फील्डर तैनात थे साद खान। खैबर पख्तूनख्वा ने इस ओवर से 9 रन बनाए, 102 पर 3। आज 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का फैसला किया खैबर पख्तूनख्वा ने। एहसानुल्लाह ने पिछले मैच में बड़ा तेज़ स्पेल किया था, और नियाज खान जिनका नाम आप देख सकते हैं बिल्कुल इस फहरिस्त के आखिर में, ये भी तेज़ बॉलर हैं। सरवर अफरीदी वो भी अच्छा ऑप्शन है, और अबरार अहमद को वापस बुला लिया गया। एक ही ओवर यहाँ पर भी कराया गया साइम अयूब से। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, खुशकिस्मती है कि सिर्फ 9 रन ही दिए, क्योंकि बॉलिंग उनकी कंप्लीट है, और यहाँ पे 2 ओवर्स करने हैं अबरार को। आखिरी 5 ओवर्स का खेल आना है। यहाँ पे सिंध को थोड़ा ख्याल करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दे देने आखिरी 5 ओवर्स में, क्योंकि ये कल जैसा पिच नहीं है। यहाँ पे उस तरीके से शॉट्स नहीं लगेंगे जो कल लग रहे थे शर्जील की जानिब से। अबरार अहमद
कि अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। पावर प्ले में ज़्यादा बॉलिंग की नौबत आई नहीं। ये पसंद करते हैं पावर प्ले का चैलेंज जो है इन दिनों। अबरार अहमद नई गेंद पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है और ये सिंध के हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव क्रिकेटर हैं इस सीज़न में। अच्छी पिचेस पर जिनमें स्पिनर्स के लिए खातिर खा मदद नहीं थी, उन्होंने खासा परेशान किया बैटिंग लाइनअप को। और जिस रफ्तार से ये बॉलिंग करते हैं, मुश्किल होता है कि आप इनको निकल कर हिट लगाएं सर के ऊपर से, जैसे साइम अयूब को पिछले ओवर में आमिर ने किया था। यहाँ कंट्रोल बहुत अच्छा है, लाइन और लेंथ बहुत अच्छा है और पेस जैसे आपने जिक्र किया, अगर उस स्पेस और इस मिस्ट्री के साथ आपके पास कंट्रोल आ जाए तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं इस लेवल पे। यहाँ पे इब्रार दिखाते हुए क्यों वो इतने शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे गिरा हुआ बॉल, ऐसा लगा जैसे एज लगा है। उनकी तासरात तो यही बता रहे थे। एशिया कप में अभी जिस तरह की बॉलिंग ठिकशाना कर रहे थे, जो श्रीलंकन स्पिनर हैं, उनने बहुत परेशान किया ज़्यादातर टीमों को पावर प्ले में भी, और उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी उनका जो आखिरी ओवर था वो वहीं से खेल का नक्शा बदलना शुरू हुआ था, क्योंकि सिर्फ 3 रन वो देकर गए थे और जो पाकिस्तान की पार्टनरशिप का मोमेंटम था रिजवान और इफ्तिखार का, वो टूट गया था। तो ऐसे बॉलर्स कारआमद हैं आजकल इन एशियन कंडीशंस में, इस तर्ज के खेल में। और उस लेवल पे अगर आपको कंट्रोल आ जाए तो आप ज़्यादा कारआमद हो जाते हैं। अबरार अहमद जैसे आपने कहा कि बहुत इम्प्रूव क्रिकेटर हैं और यही वजह है कि वो नए बॉल के साथ भी ओवर कर रहे हैं, सर्कल के अंदर भी, और आखिर में डेथ ओवर्स भी कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत ट्रस्ट करते हैं कैप्टन उन पे। यहाँ से जो पिछले 2 ओवर से उनमें एक छक्का एक चौका लगा था, इस ओवर में अभी तक बाउंड्री नहीं आई। अब वो मरहला आ रहा है जहां हर ओवर में इनको 2 बाउंड्रीज ढूंढना होगी खैबर पख्तूनख्वा को, अगर इन्हें जाना है 160 की तरफ। फिर बैकफुट पर खेला, आला फील्डिंग सऊ शकील। आमिर अजमत क्योंकि बीमारी के बाद इस मैच में वापस आ रहे हैं तो ऐसा लगा जैसे थके थके नजर आए यहाँ पे, क्योंकि दूसरे रन की कोशिश भी नहीं की। अच्छी फील्डिंग साउथ शकील की जानिब से, दूसरा रन यकीनी तौर पे रोका यहाँ। 16 ओवर्स के बाद 107 पर 3 केपी। Khyber Pakhtunkhwa grappling to reach to a decent total. And here how things fell. Haris again looking to slog into that leg side. He was exceptional. Zahid Mahmood mixed it up nicely. This one got some air, but no distance. Good catch by Faraz. He's getting away from the delivery. This was the very next ball from Zahid Mahmood. Has been exceptional tonight. Brilliant spell by him. Khyber Pakhtunkhwa under a little bit of trouble. Here's how Sindh, the bowlers went out, 2 for Zahid and 1 for Sohail Khan. You feel this game is on a knife edge. This is not your usual 180 wickets, so Khyber Pakhtunkhwa has built a platform. We've seen though when batters try to accelerate, push on to the next gear, it hasn't been easy. This is very, very crucial passage of play. 140, 150 could be a good total. Only time will tell. This is the least that Khyber Pakhtunkhwa will be aiming for. There's 4 overs left now in this innings. What can Khyber Pakhtunkhwa extract? Sohail Khan back with the ball. Been decent swinging the ball with the new one. Giving away 14. 1 wicket to his credit. Down the track, he's got the connection, but not the distance. Straight away, Sohail Khan provides the breakthrough. Once again, Faraz Ali at the right place at the right time.
Adil Amin was looking to take charge of Sohail Khan. Just not decent enough connection. The idea was right. He chose the right stroke, but the execution wasn't there. So regular seam-up delivery, gave himself some room to open up that offside. But excellent catch for Faraz once again, positioning himself nicely. Loss of wicket will derail the momentum of KP. And Sindh will really enjoy taking wickets at regular intervals. KP 107 for 4. Bottleneck scenario for Khyber Pakhtunkhwa. Mohammad Sarwar walks out. He loves to bat. Quick single. They'll opt for that. Clever from Sohail Khan. Balls are gripping a little bit. This is Adil Amin's demise. You could tell as soon as he hit it, he knew he hadn't got all of it. But credit to Faraz, and Sindh's catching has been better. They showed a poor showing yesterday against Balochistan, but they've been much better today. 150th wicket for Sohail Khan. He's always a person to rely on with the ball and even with the bat as well. Server on strike. And they're pushing hard, but the fielder is being tested. Had to abort that double. Good fielding in the deep. Server with a strike rate of 160, but look at Sohail Khan. Just the length slightly fuller. And perfectly anticipated and judged by Faraz Ali. 150 wickets in this format for the veteran Sohail Khan. Wily old campaigner, still going strong. Slow one. And it's been dispatched. Well fielded in the end. Asif, he's doing the work. You can hear a loud grunt just to distract the batter. It was a slow one. Fielding can make a huge difference. Yes, indeed. Back at the hand, slow delivery, but Asif covering the ground very quickly. Look at that. Using his reach to prevent a boundary. Runs are of premium importance here. Every run is vital. One feels that this is going to be another low-scoring game, and it's be very tight. To send back the fine leg to the boundary. Probably looking for a Yorker. That's through, and that's over. And there are more runs, and it's going to hurt Sohail Khan. Incredible stroke. Mid-off was up in the ring, but this was dug in short. And Server just flat batted it. This is one of the reasons he's striking at 160, his career strike rate, because he can hit the ball in unusual areas. And that is one of his strengths. I don't think Sohail Khan was expecting him go in that direction. Forehand shot. Good follow-up. Right in the block hole. I tell you, this is not easy to bowl these Yorkers. It takes a lot out of you, and Sohail has finished off with 2 for 22 of his 4. 115 for 4 after 17. So Shakil trusting Ibrar Ahmed with another one. Been decent. That has been the story so far. That was Zaid Mahmood's over. Consecutive wickets back to back. Could be a single.
just inviting the batters to go big. Not that sort of surface where you can control shot. The option that Saud has, Abrar has got this one, Mir Hamza has got 1 over, Asif has got 2. Will he trust the youngster? Knocked him over, inside edge, slower in the air, and completely bamboozled Amir Azmat. Amir Azmat, he was looking for a big shot, he was trying to target Abrar, but he is a wise campaigner, slow in pace. It's the length that actually invited him to play that shot, but it never arrived. He's having a laugh, the last laugh. Amir Azmat goes on 18, KP 116, 5 down. The captain walks in, Usman Khalid. Doesn't have a lot of time on his hands. They need to reach something which they can provide to their bowlers to defend. Sindh has been spectacular with their bowling and fielding. 74 games, 491 runs, the average of 15 and 124. He's a utility cricketer. And he's tailor-made for any situation. He'll be looking to provide the finishing touches in the remaining, 16 deliveries. Quick single. For a moment, he was looking to hit big, but it decided against him. That's the wicket. Way outside off stump, just dragging it, never allied. And that Amir Azmat just threw his shot quite early. What are they looking at, Khyber Pakhtunkhwa? Even if it at a runner ball, he was once again, Amir was through his shot quite early. Sarfraz like that. And Abrar as well brought a big smile to his face. Spinners love when they deceive the batters in the air. And this is what exactly Abrar done. 13 deliveries to go in the innings. Runner ball will take him to 130. Probably they will want 140 at least. 18 gone, 118 for 5. They are happy witnessing their favorite stars in front of them. Under lights, always a delight. Always seeing themselves on the big screen. That brings out big smile on their faces. Lovely to see. It's a pretty decent crowd today. Yeah, that's the biggest catch. Mir Hamza. He's been decent. Unlucky, he couldn't really bag any wickets. He gave away 15 in his 3 overs. Third man inside the circle. Mid on, mid off. Long on, long off. Deep cover. Got deep square leg and deep mid wicket. That's the field. Oh, he slashes it hard. And I don't think fielder will stop it. Lucky boundary coming through for server. Astonishing stroke because it was almost in the block hole. To get underneath there and get some elevation to get it over that fielder at extra cover. Look at that. Almost landed on that line of the crease. Slightly short, but that bottom hand. These modern day batters, they have such range of strokes. And server can be a dangerous man in this situation. Change in field right away. The sending point to the boundary. Deep square leg coming back into the circle. Probably going back to his wide Yorker strategy, which he did so successfully yesterday. That's the area. Brilliantly bowled. Outside off stump. No room to maneuver with. That length.
That backward point fielder is deep. So that is protecting the boundary, although third man is up. That angle that he creates from left arm over will always take the ball away from the right-hander. And that's Sharjeel. A lot of people will be tuning in to watch him bat tonight. The way he played yesterday. It'll be another treat in waiting. Significant hit. That will earn some runs. One bounce over the fence. Splits the two fielders straight. And split him to perfection. Because both the long on, long off fielders was pretty straight. But the key is the way Khalid Usman just moved outside of his stumps to play with Mir Hamza's plans. Look at that. Just the length allowed him to get underneath it. For once, Mir Hamza not nailing that Yorker. Not a lot wrong, just a few inches short of that mark. And Khalid good enough to take full advantage. You need a big heart to be a fast bowler in T20 format. These modern day batters, they just open up their stance and it's very hard to contain them. Point fielder has come back, so probably plan B from Hamza because square leg has gone back. You don't want to bowl Khalid Usman the length. We saw him smack a magnificent six last night against Shinwari. Same angle. Don't give him length. Oh, that's traveling. That's traveling and it's going over the boundary. Maximum. And Mir Hamza will be hurting. So would be Sindh, who went sailing into the Fazal Mahmood enclosure. Most thickly populated stand and brought the spectators onto their feet. Length again. This is what you don't want to give Khalid Usman. He's ready and waiting for that. And once that ball hit the sweet spot of the bat, it landed in the crowd. Big over and important runs for Khyber Pakhtunkhwa. He's getting some pounding. Mir Hamza. Been expensive. He's bowled him! Got his revenge! Mir Hamza! The sigh of relief finally for him. Well, he has the last laugh, although he's not laughing because he realized this low-scoring, tight contest. He had quite a few runs away, but on that occasion, a little bit of shape as well. Khalid Usman couldn't get underneath it. This time it went under his bat. Mir Hamza will take the wicket. Khalid Usman, a little cameo, 11 of 6. Khyber Pakhtunkhwa, 133 for 6. Margin of errors are so minuscule in this game. Mir Hamza this time nailing a perfect Yorker. Niaz Khan getting his first outing. He doesn't have a lot of time on his hands. Just one delivery to go. Again, he finish good. That's the question. Mir Hamza been expensive in this over. Full toss. Niaz Khan has announced his presence right out from the middle of the bat. He's absolutely nailed it. Where were you, Niaz Khan? Mir Hamza once again erred in his line and length. And Niaz Khan, the long handle, he's got long levers. This one soar up above and into the fence. Magnificent finish to the over. At 140 that we were talking about, Khyber Pakhtunkhwa has gone up to 139 with 1 to go.
What a turnout of the events. 21 runs being conceded by Mir Hamza in the previous over. And that has shifted hugely the momentum towards KP. Nas Khan, wow, that was some hit. Just came out all guns blazing. 1 ball, 6 runs. What would be the strike rate for Nisar? Asif with the last over. They're dugging, trying to just take that Yorker. Couldn't really get hold of it. Niaz Khan is back on strike. All right, guy. What do you have? That's the last wicket. Just getting a little greedy. He had to go for it. Had no other option. But on this occasion, Mir Hamza was spotless. You made a good point. This game has so many small margins. He's splashing the bat, but it's going to find the fielder. Niaz Khan, just 1 big hit and he'll have to take the walk back. Well, 2 deliveries, 6 runs, a strike rate of 300. Faraz Ali, 3rd catch of the innings. Ball has been following him. Niaz certainly had no other intentions than hitting that ball out of the park. On that occasion, didn't find the middle. That 1-6 propelled his side to 140 now. 4 deliveries to go, 140 for 7. .140 on board. KP will definitely be happy about the comeback they've managed. Some few big overs. Sindh again struggling in the death overs. 4 more deliveries. That's aerial, and that's going to be another wicket for Asif. Easy catch for the captain, Saud. Wickets are tumbling in search of some quick runs. Sarwar Afridi. This is his role. He's the finisher. He had to go for it. I have to say disappointed with the stroke because Asif had given him the length to work with. Just couldn't find a good connection, and Saud Shakil takes an easy catch. Since catching has been good tonight. 3 for Faraz Ali and this one for skipper Saud. KP 140 for 8. Second time in this innings, the Sindh bowlers will have a go at a hat-trick. Asif this time, early on it was Zaid Mahmood. Will he be able to get his 7th hat-trick of this tournament? Imran Khan Senior walks in. He has a smile. He's going to make sure he creates an impact. How come he's not number 11 today? Let's give him a chance. What can he get from these 3 deliveries? He's not on. Bowled him. And that's the hat-trick. Brilliantly bowled, Asif Mahmood. He'll cherish this. 3 wickets back-to-back. Getting his first hat-trick in this tournament. That smile was priceless. This is the 7th hat-trick of the National T20 Cup. And look at him smile. He really enjoyed that. This is magnificent effort from the youngster. Nothing like taking wickets at any stage of the game. And 3 in a row for Asif Mahmood. That is a picture he will cherish for a long, long time. And look at Sarfraz. He's all pumped up for him as well. Another duck. Imran walks out without troubling the scorer. 140 for 9. Smiles all over. Asif Mahmood. It's been brilliant. It's never easy
to bowl a hat-trick delivery, but he was spot on within the stumps, good length, and he castled Imran Jr. Well, he can make history here. Asif Mahmood, as we watch the hat-trick, third wicket victim. There's never been 4 in 4 in national domestic T20. He could write his own history here. Asif Mahmood, can he do it? Come on, Asif. Last wicket for KP. Oh, almost. He went hard at it. Never carried to the fielder. And they will manage just a single. Brilliant comeback by Sindh. I have to give it credit to Brar, and Asif Mahmood has been exceptional in the death overs. Mir Hamza, yes, he did went for runs, and a lot of them. Just one more delivery. Can we see a maximum? Or a wicket? Oh, he's plugged that out. He's plugged that out, and it's traveling all over the boundary. You called for it and you got it. Asif Mahmood, this is cricket. It's a great leveler. A minute ago, you couldn't wipe the smile off his face, and now he's been hit by number 11 out of the park, and KP finished on a high. What a sensational innings this has been. Full of action right down till the last ball of the innings. His hat-trick over has been spoiled by that maximum, but you have to give credit to him for sure. What a roller coaster of inning this was. KP did struggle to get some momentum. Sindh was on top of them, but then things turned around. Have a look at that. These numbers say a lot. Hat-trick in the end. One Manhattan long tower there. That was Mir Hamza's over, 21 runs. Most expensive over of the innings was the 19, but 3 wickets in the last. What scenes here at Multan Cricket Stadium? Khyber Pakhtunkhwa. Shahzada Farhan with 44. The middle order did struggle. Haris wasn't convincing at all. But then few cameos. Khalid Usman rather, 11 of 6 deliveries. And in the end, finishing it with a 6, Imran Jr. They managed to get a decent total. More than decent, I would say. 147 on board. Sindh were pretty decent. Asif Mahmood, the hat-trick bowler, grabbing 3. Zahid Mahmood was exceptional. He got 2. 2 for Sohail Khan. Mir Hamza and Ebrar Ahmed with 1 each. They kept things silent in that economy column and contained KP on 147. Khyber Pakhtunkhwa's opening partnership didn't last that long, but Shahzada Farhan was crucial. He went straight away for runs. Got lucky on occasions. He did capitalize. This was the first blow. He was always struggling, Haris. Shahzada Farhan, he did get few connections going, targeting the spinners into the leg side. He was spot on with his shot selection. Boundaries kept on flowing, and this was a half chance. Faraz missing on that occasion. Run never stopped. That was a big shot going all over the boundary. Miscued one. And Zahid Mahmood finally got his first man. Good catch from Faraz Ali in the deep. He was exceptional. This was the second one. Next delivery follow-up. Another wicket for him. Ebrar Ahmed, he did keep things quiet. But this was a suicide. Very late to decide. They went for the second one. The rest was done by Sarfraz. This was good hit coming down. Amir Azmat coming into the playing 11. He made sure that he made an impact. And this was just a half chance sailing all over. Straightforward catch. Brought end to that momentum. And this was Sarwar. He managed to get some boundaries going. But Ebrar had the final laugh against Amir Azmat. Sarwar, that was a very expensive over for Mir Hamza. 21 runs coming. Khalid Usman capitalized this, hitting everything out of the park. But
Lastly, Mir Hamza was relieved. A perfect Yorker to bring an end. This was Niaz Khan having his first go. Couple of boundaries coming in, and then the hat-trick over for Asif. This was the second one. A lot of elevation but no distance, Saud Shakil, and this was a hat-trick delivery. Right on the money. Imran Jr. had to go for it. And smiles all over. The seventh hat-trick for Asif Mahmood. Wasn't his was first. This was the final blow, the maximum of the last delivery, which took KP to 147. They'll be delighted. Sindh scoring at 7.35, need 148 to win. How they will commence their run chase, we'll see after a break. Welcome back once again to the Multan Cricket Stadium. It's KP vs Sindh in match 24 of Kingdom Valley National T20. Well, since the games are now under lights, let's find out what's the story with Dew and Shah Faisal is down there. Well, Sikandar, it's nice and pleasant here. Once again, a little bit of breeze, and I think it's pretty comfortable for players and spectators. In terms of conditions, if we do the same again, no dew whatsoever. No, we do it again. We didn't see it because we were watching the weather. Yeah. There you go. Yeah. I can do it as many times as I can,
but there is no dew. The temperature is 33 degrees, but it feels a lot pleasant out here in the middle. Tell us a little about, you said the breeze is there. So obviously when you have breeze, then you can't really have dew because it just blows everything away. But in terms of the towels we saw, I don't think they've come into use at all. Yeah, not really, because for most part of the day it was cloudy. In the afternoon the sun did come out for a while, but it was sunny, it was cloudy and hazy, so that means that there won't be much dew. So the conditions are set fair for both teams. We saw some cracking action in the first innings, and we expect to see some more. How was dinner? Always good. Okay. Cannot complain with that. Enjoy yourself. Thank you. This is what happened. KP was asked to bat first. Good start from Sahibzada Farhan, 44. The struggle still goes on for Haris. And then down the order, they're just chipping in with like 17s, 20s, 18s. They've got themselves to 147. You'd still feel safe with another 15, but it's going to be a fight on. I have this feeling. It's been good performance by Sindh's bowling. 2 wickets for Sohail Khan. He bowled beautifully with the new ball. 1 wicket for Mir Hamza in the end. Ibrar Ahmed also bowled well in the circle and in the death too. 2 wickets for Zahid Mahmood. But then Asif Mahmood happened. 3 wickets that included a hat-trick. That was a wonderful over to finish off the inning. And KP could only score 147. So we all know what KP needs to do. They need to get the man on the left quick and early. And don't mistake Simon Ayub as well, who's in good form. But what happens with Sharjeel is that he takes the game away very quickly. And opportunities will come. You need to grab them. Saim, on the other hand, has been in prolific form. It's an absolute treat to watch him bat, especially with those cover drives. He plays the ball to merit. So KP would be looking to get some early breakthroughs out there. Shajil Khan scored 5th century of his career yesterday. Can he repeat that performance? That would become very handy for Sindh side. Good numbers, 3,476 runs. Strike rate is the most impressive part. 140, 15 50s and 5 centuries. Such a huge impact player he is in T20 cricket. And he's up against Imran Khan Senior. No shortage of experience. 95 wickets. And that economy also very good, 7.89. I would feel that KP is touch happier at the moment. They got that momentum in the end. The last ball 6. And they've got that score that they would fancy defending. Let's go. Catch it is the call, dropped. 4th catch in less than 24 hours of Sharjeel's bat. Sahibzada Farhan exactly doing what Balochistan did yesterday. You don't want to be dropping this match. Remember what he did to Balochistan after that. And the very first delivery. Imagine what this wicket would have done to the confidence of these bowlers, and rightly so. He is frustrated. That is disappointing for KP side, and somebody like Sahibzada Farhan, you don't expect it. Opportunities will come because he's going to attack. Pretty sure Imran Senior won't give up. That's 4. It's got something on it. Heard a sound. It's a wide. No, it's a wide. 5 wides. That's pure frustration. This is what happens when you drop a catch early on the very first delivery. It frustrates the fast bowlers. And then trying a little too hard. Imran Khan Senior again trying to ball that length delivery. It was always going away from the wicketkeeper.
They got a man at a deep backward square leg for that shot that he attempted or tried to play just now on that wide ball. The other one is a wide third man. What's it going to be now? Nice ball. Wait for the umpire's signal. Leg byes. Khalid Usman will have to be spot on with his decisions. This is an important game. They've lost already 2 consecutive games. They want to come back to those winning ways, and that's how Sharjeel Khan was dropped yesterday. Balochistan, first one from Hasibullah. This one was a sitter. It went long way in the air, and Haris Sohail, and this one even easier. In and out. Swing for Imran Khan Senior, and that length very dangerous. It's not going to be easy, I tell you. This match is going to the wire, I'm telling you. Probably that patch I was talking about earlier. A couple of patches on this pitch where the ball holds up a little and sometimes it skids on, keeps low. That is probably playing in his mind, Sharjeel Khan. It's not that conducive for that stroke making that Sharjeel is used to. But then if you don't take catches, he will score runs. Shot. Beautiful shot. The width is the punishment. Brilliant. Saim Ayub is in tremendous touch, and look at that. Wonderful. Just shuffled across a little. Stand and deliver. Imran Khan Senior's first over has already given 10 runs, 5 wides, a boundary of Saim Ayub's bat, a drop chance of Sharjeel's bat. That's a better line. This boy is a very smart cricketer, Saim Ayub. He's full of strokes and he's got a very sensible head also. And on the other hand, Sharjeel Khan just he knows one way. He will give you chances, the opportunities will come, and make sure you take them. He was dropped and then he made them pay for it. His 107 not out of just 62 is all around the park. Spinners weren't spared. Fast bowlers were attacked and he was just enjoying every bit of it. First 100 of the tournament. Long waiting from Sharjeel's bat as well. End of the first over, 11 for no loss. He's going to hit the deck hard, so whatever bounce you're talking about all day long will be tested here. 3/35 is best. It's in his 4th game. There you go. Straight away, he does that. Likes to hit the deck hard. His performance yesterday. First appearance in the national T20. He was amongst the wickets. Herrera couldn't get out of the way. Then this one also got big on the batter.
And then this shot every time is attempted by a batsman. I feel they are all set to lose their wicket, because this is something that was 50-50. That's just passed, got into the gap. Nicely done. Great stop this. Third consecutive game for KP. You still see that the fuel is there in the tank. The kind of chase the fielder gave. Adil Amin doing the fielding there. It was not quite timed it properly. That's the captain. He's in the game. He's worried. He knows that he doesn't have many runs to defend. 135 after this. Got to be spot on with everything, and they've already made a mess. Nice pace off. And we saw these 3 wickets from Ehsanullah from the game yesterday, but for me it was his non-wicket taking deliveries that scared those northern batters. He was really brutal, hit that deck hard, that length. There were a couple of deliveries that he actually scared them out. With his pace, with his bounce, he's definitely one for the future. And the sound, what was that sound? Bat hitting the turf. The 2 umpires are going to consult. What's the consultation for? Is the catch taken cleanly, or is it there an edge? Because the square leg cannot tell you about the edge. He can only probably help you out if the catch is taken cleanly. No, the catch was fine, I guess. It's the bat hitting the turf and the ball at the same time. That is the question. Let's have a look at what soft signal is from the umpire. That's going to be very interesting. He says not out. He says not out. I'll have to work hard in having a second look at it with naked eye. The soft signal is not out, so it has to have conclusive evidence to overturn the on-field decision. First thing first, if it's a legal delivery, it is. Now, remember, it has to be conclusive to overturn. Catch is clean, there is no doubt about that. We're looking at if the edge is there. Or are we looking at the catch? If it's about the catch, it's clean. If it's, yeah, that is an easy catch. But I thought they were checking for that. Bat hitting the turf. He's given it out. Right decision made. Saim Ayub, it's a big wicket for Ehsanullah. Surprised him with that Yorker length. First blow for Sindh. 13 for 1. KP has got their first man. The man in form, Saim Ayub, is back, and now comes the captain, Saud Shakil. That's the type of start that KP were hoping for.
off the mark straight away. Yeah, in the post-match yesterday, Saud said that he was feeling good individually with the bat. I was confident that I can chase it down with the help of my men. That's the wicket. Ball has hit the turf. The bat has rubbed the turf, and the ball has also taken the nick at the same time. So yeah, he's pretty confident, Saud Shakil. Let's see what he can do today. I hope it's just not the commentator's curse and spoken too early. Sharjeel has not scored as yet. Everything's come off the legs or wides or leg byes. He's given one opportunity of a catch, 14 for 1 after 2. Let's have a look at that wicket again. For a moment, I thought the signal, that soft signal, was of that bat hitting the turf at the same time that ball has hit the bat. Because it was a neat catch. There was no problem whatsoever. Look at this. Yeah, there's no problem with the catch. They cannot give soft signal not out for that. But yes, this was inconclusive. That was doubtful. Well, the decision has been made. Saim Ayub is back. Sindh are 14 for 1. That'll be 4. Imran Khan Senior will have to tighten that line, get closer to the body of the batsman rather than providing them the opportunity to free their arms. And that's easy pickings. If you ball at that line outside the off stump, and somebody of Saud Shakil's caliber is not going to miss out on that. Got to be careful with that line and length. Imran Khan Senior, you don't want to be giving extra runs, easy runs to these batters, because Sindh now require 130 runs. Not a huge total. They've got a lengthy batting side. Saad Khan included today, very talented. There's Faraz Ali, there's Sarfaraz Ahmed. Got plenty of batters. They're getting the swing though. Just got to use the right channel and be consistent with that. We've seen that they can get the swing, and then inconsistency in that line and length causes them. Had that catch been taken on the very first delivery, would have been a different story. Saud Shakil, it's been a struggle to start off this tournament, but he's getting that. It's getting there. 70 against Northern and 20 not out against Balochistan. So he's coming in form at the right time of the tournament. That's a good shot. Played it hard into the ground. It'll be stopped, but it's run still nevertheless. 2 of them. It's that man again, Adil Amin. Doing the chase. Could not prevent 2 runs though. It was nicely, sweetly timed by Saud Shakil. He looks so elegant whenever he's in full flow. Look at that. For a second he thought he's timed good enough for a boundary. But that sprint from Adil Amin, brilliant. He's a tense man at the moment, Khalid Usman. Yeah, there's a point fielder at deep now, because they now realize that Saud Shakil fancies that area. And we've seen a lot of times in T20 cricket, this modern field settings, they get that point at the boundary pretty early in the inning. Interestingly, that they've kept the same field for Sharjeel Khan. Also, just like Saud Shakil, he's getting the form right at the right time. That 49 against Southern Punjab and that big 100
against Balochistan will give him a lot of confidence. Sharjeel is still surviving on leg buys. Just want to have a look at that Saim Ayub's wicket, because the bat's hitting the turf, the ball when it passes around the bat, it's very, yeah, it's got two contacts here. Yes, the bat is hitting the turf, and yes, it has taken some part of the bat. From this angle, you just feel the ball is already passed when the bat hits the turf. It's touch and go. I mean, we had this earlier in the day as well. Three gone, 23 for 1. Sindh 23 for 1 after 3. Some problem with the side screen. And somebody's forgotten to cover the advertising hoarding with the black cloth. So we need that to be covered. Oh, he's fine with it now. Looks very elegant, Saud Shakeel, even if he's defending. He's been the part of Pakistan test side. He's been given the responsibility to lead this Sindh side, a new look Sindh side, and he's done a good job till now. He's back into the winning ways. Made a few changes, brought in Asif Mahmood. That was a good change. Got a hat-trick today. They're at the number 2 position in the points table. Must have given him a lot of confidence. For throwing the bat at it, it was Fuller. Superbly timed. Footwork not quite there, but it will do. The hands would do. Just went through the shot. There was no fielder. Earlier they had point there, but they changed the field for Ehsanullah and paid the price. Saud Shakeel is looking very dangerous. Saud Shakeel is batting well. It's just about his partner. Sharjeel's been out there and he hasn't used his bat yet. He's yet to get out of the mark. Every run he's run is off a leg by. I don't mind that. As long as Sharjeel stays on the pitch, he's such a threat to the bowling side. That kicked on. So as long as he stays on the pitch, he's a threat for the bowling side, because he can anytime get in the form and start hitting big sixes. You know him. He's capable of doing that. You're pretty much a threat whenever you praise someone. I'm not saying anything. I'm not saying anything. It was bound to happen. Only we know it will. The man's absolutely dangerous. 27 for 2. Saud Shakeel didn't get it on the bat.
I'll take Ali Yunus to continue with that shot. I am so sorry, Saeed Shakil. The length delivery. The shot was on all right, and hurried on to it. And good captaincy, had a fielder placed there for this type of shot, and he played it right in his hand. They're checking for a no ball maybe. Don't tell me they're checking for the catch again. No ball? It's fine, it's fine. Saud Shakil was looking good until that happened. 27 for 2 in the 4th over. Sanullah has got 2 wickets. New batter in Saad. He's one of your favorites. You speak very high of him. Please. When I did, he was dropped from the next 2 games. He's making a comeback. I'm not saying anything about him. Just that he's very talented. He's got an average of 29. Strike rate is healthy. Best of 40. Both the batters are on 0 now. He's got a bit of hand to it. Off the mark, Saad. Let's have a look at the wicket again. He hits the deck hard, we know that. That's why the ball gets big on the batter. You're trying to pull, you just feel that it's come quicker than you expected. Hits you high on the bat. Kamran Ghulam took the catch. Yeah, he knows it. Couldn't time it. They're a batter and an all-rounder shot in this side, Sindh. There is no Umair bin Yusuf. There is no Anwar Ali. There's Sarfraz to come and Saeed Faraz Ali. So this partnership has to go big. End of the over. 4 gone. It's 28 for 2. भाई बड़ी पुरौनक जगह है ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां गेंद और बल्ले के दरमियान सख्त मुकाबला देखने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। ये रिकॉर्ड तादाद है, रिकॉर्ड गिनती है इस टूर्नामेंट में। रावलपिंडी वालों ने कदरे सर्द मेहरी का मुजाहरा किया था, लेकिन मुल्तान में बहुत ही अच्छा मुकाबला देखा जा रहा है और दिलचस्पी है इसमें। ये अच्छी खबर है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। शाजी जी बिल्कुल तारिक, आज काफ़ी रौनक है यहाँ पे। एक से ज़्यादा स्टैंड्स में तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और मुकाबला भी कांटे का है। टूर्नामेंट की जो सिचुएशन है, जो तमाम ही टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल मौजूद हैं, और आज उस पर जो आज की विकेट है वो भी अच्छी है। सानुल्लाह का पिछला ओवर हमने देखा, बैट्समैन को उछलने पर मजबूर किया उन्होंने। अपनी तवील कामत से अच्छा बाउंस हासिल कर रहे हैं। बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। खुशी का नज़ारा इन तमाशाइयों के लिए भी। शर्जील खान जो हैं, ये बड़ी पुरस्कार सी इनिंग्स रही है अब तक
5 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक से भी दूर रहे हैं और अभी तक रन भी उन्होंने नहीं बनाया। अभी हालिया बरसों में इनकी कुछ शोहरत ऐसी हो गई है कि ये पावर प्ले में भी ये पिच पे पहुंचते ही अपने शॉट्स नहीं खेलते हैं, ये कुछ वक्त लेते हैं। तो बाबर आजम जब इनके साथ कराची किंग्स के लिए इनिंग्स का आगाज़ कर रहे थे तो मुखालिफ टीमों की अक्सर कोशिश होती थी PSL में कि वो बाबर आजम को ऑफ स्ट्राइक रखना चाह रहे थे। शर्जील कोशिश होती थी टीमों की कि शर्जील ज़्यादा सामना करें क्योंकि ये कुछ वक्त लेते हैं, कुछ ओवर गुजार देते हैं रन्स के बगैर, बाउंड्रीज के बगैर। और आज बॉलिंग भी ज़्यादा शॉट की नहीं KP वालों ने शर्जील को, बिल्कुल ज़्यादा रूम नहीं दिया ऑफ स्टंप के बाहर, जो वो पसंद करते हैं, अपने हाथ चलाते हैं। और जो बैक ऑफ अ लेंथ है, जो पिकअप शॉट है उनका ऑफ द हिप्स, वहाँ भी बॉल नहीं किए। ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर ने होता नहीं शर्जील के खिलाफ बॉलर्स के लिए, लेकिन KP ने बिल्कुल है उन्हें कोई मौका नहीं दिया अभी तक। 2 मैच हारने के बाद उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है। अनवर अली आज नहीं खेल रहे क्योंकि मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन अभी इत्मीनान है सिंध के खेमे में। जानते हैं एक पार्टनरशिप अगर होगी तो काम जो है वो बन सकता है यहाँ। लेकिन ये भी क्या नज़ारा था आज कि एक बहुत ही लंबे कद का फास्ट बॉलर, टूर्नामेंट का सबसे तवील कामत बॉलर जो है वो निस्बतन छोटे कद के बैट्समैनों को बॉलिंग कर रहा था। जी बिल्कुल, और साद खान का कद भी ज़्यादा नहीं है, वो भी मिडिल में। दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि खालिद उस्मान क्या एहसानुल्लाह का स्पेल जारी रखते हैं। यहाँ ये अमेरिकी कौंसल जनरल हैं विलियम मैकॉनली, मिस्टर विलियम मैकॉनली, जो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और कज़ाफी स्टेडियम में भी ये नज़र आए थे। लाजवाब, ये वो शॉट है जिसे आप रात भर इसे देखने को बार बार दिल करेगा। शर्जील खान, पहली मर्तबा उन्हें अपने मतलब की लेंथ मिली और लाइन भी, और शर्जील खान चुके नहीं। बहुत तेज उनके हाथ गेंद की तरफ लपकते हैं, बैट स्पीड शानदार। ज़्यादा बॉल थोड़ा सा बॉटम की तरफ ज़रूर लगा, लेकिन क्योंकि बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी हैं, लगाई हुई ये स्ट्रोक भी बाउंड्री तक गई अब बासानी। मुसलसल तीसरा ओवर इमरान खान ने किया, जो 7 रन पर अभी मुंतज हुआ। 5 के बाद 35 पर 2। मिस्टर विलियम मैकॉनली, जो अमेरिकी कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ अब्दुल सबूर हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यहाँ सदरन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, और इनकी बड़ी खिदमात हैं क्रिकेट के लिए। एक ज़माने में अंडर-19 क्रिकेट खुद खेल चुके हैं अब्दुल सबूर भी। वसीम हैदर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनर। गैप ढूंढने में कामयाब हुए और बाउंड्री भी, हालांकि बोध ना होने के बराबर है। बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के दरमियान, और गेंद को निकाल दिया उन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान से साथ ने बड़ी महारत से। अच्छा बाउंस को कोप किया इस मर्तबा, स्क्वायर ऑफ द विकेट। सिर्फ टाइम कर दिया बॉल को, इस विकेट पर यही करने की जरूरत है। ज्यादा बड़ा गैप नहीं था, बल्ले का रुख आखिरी लम्हे पर मोड़कर गैप हासिल किया। एक अच्छा मुकाबला होगा। इमरान भी बैक ऑफ लेंथ बॉल अच्छे कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सिंध ने 39 रन दिए थे। क्या ये गेंद लगी थी ग्लव्स को, ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। 1 रन का इजाफा, और शायद ये पैड को लगती हुई गई थी, इससे सुख का सांस ले सकते हैं।
मोहम्मद। हारिस ने अच्छा ग्राउंड कवर किया, पहले एक कदम बढ़ाया गेंद की तरफ और फिर फुल लेंथ डाइव, लेकिन गेंद थाई पैड से लग के गई थी साद खान के। बहुत ही एक्शन पैक्ड क्रिकेट हो रही है आज, और हाँ, ये इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि T20 क्रिकेट में ज़रूरी नहीं कि आप 200 रन बने तो वो मैच एक्शन वाला हो। यहाँ पे भी हर बॉल पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इन प्लेयर्स ने दी है फैंस को। यहाँ सिंध ने स्विंग और स्पिन के जरिए काबू पाया केपी की बैटिंग पर, और अब हमें पेस और बाउंस देखने को मिल रहा है। इमरान जूनियर जो हैं ये भी अपनी रफ्तार से मुतासिर करते हैं, इनकी कोशिश होती है कि बैट्समैन इनको अगले कदम पर ना आए। फिर अच्छा बाउंसर बमुश्किल इसे खेल सके लेग साइड में। पहले मैच में जब बात हो रही थी तैयब ताहिर से सिकंदर की, तो उन्होंने कहा था ये 2 पेस पिच है, थोड़ा सा जो आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से बॉल बेहतर स्लाइड कर रहा है इस मैच में। लेकिन अभी भी आपने देखा शर्जील इस पुल शॉट पर लेट हुए, ये जज करना बहुत मुश्किल है बैटर्स के लिए, और टाइमिंग हासिल करना भी मुश्किल है। शर्जील जैसे बैट्समैन की 11 गेंदों पर 6 रन इस चीज़ का सबूत है। ये गेंद ऑफ द सीम कट हुई और शर्जील बाल बचे। अगर इस गेंद को रोल कर देते, क्योंकि लंबे कद गेंद झुकने में मुश्किल पेश आई, तो शर्जील जो हैं शायद ये पीछे रह जाते। थोड़ा बॉल स्टंप से दूर चली गई थी, इसलिए रिवर्स फ्लिक से उन्होंने कोशिश की शर्जील को मात देने की। रेस में तो वो आगे निकल गए थे, लेकिन जब तक बॉल उठाते और फ्लिक करते शर्जील पहुंच गए। लेकिन जिस तरह अर्जेंसी शर्जील अब रनिंग में दिखा रहे हैं, ये भी इस चीज़ को जाहिर करती है कि उन्हें भी एहसास हुआ है यहाँ स्ट्रोक प्ले ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन अगर वक्त लेंगे तो ज़रूर इस विकेट की पेस से हम आहंग हो जाएंगे। ओह स्मैश किया, सामने की जाने कोई फील्डर नहीं। शर्जील खान ने फ्लैट बैट के साथ ये बाउंड्री पाई और वो डबल फिगर में जा पहुंचे। फिर भी थोड़े से लेट हुए शॉट पर, लेकिन पावर इतनी ज्यादा है कि जब गैप में से बॉल निकल जाए तो फिर 4 रन ही मिलने। आउटफील्ड भी कमाल की है यहाँ पर। जो मैं बात कर रहा था, जिस तरह पहली इनिंग्स में भी देखा, साहबजादा फरहान जब सेट हो गए तो उनके शॉट्स लगने शुरू हो गए थे इस पिच पे। थोड़ा सा टाइम बैटर्स को लेना चाहिए। शर्जील लगता है उस जोन में बस अब दाखिल होने ही वाले हैं जहां वो इस विकेट की पेस और बाउंस से हम आहंग हो जाएंगे। फिर लेट हो गए शर्जील, और इस बार क्या ये 6 रन मिलेंगे? जहां रिजर्व अंपायर मुत्तला कर रहे हैं फील्ड पर कि ये छक्का है। हुक करने के लिए गए शर्जील खान, तेज बाउंसर था, और ये 12 ओवर सिंध के लिए, इसमें 17 रन इमरान खान सीनियर ने दिए। देखिए टॉप हाई था, लेकिन इसकी फिक्र नहीं। सिंध को 52 पर 2। केपी ने इस मैच में अपने अटैक का सारा दारोमदार फास्ट बॉलर्स पर रखा था। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आए थे टीम में, लेकिन अब लगता है स्पिन पे भरोसा करने जा रहे हैं। शर्जील की इनिंग्स थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हुए, साथ भी बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। विकेटें हाथ में रखनी होंगी सिंध को इस रन चेस के लिए। तो इस चांदनी रात में आदिल अमीन को गेंद दी गई है, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर पिच पर मौजूद हैं। पार्टनरशिप पनप रही है, जो फास्ट बॉलर पर रन बना रहे थे, तो इससे यहाँ अब उन्होंने चैलेंज पेश किया है कि आप अगेंस्ट द टर्न खेल कर दिखाइए। साथ की मासूमियत है, जैसे ही वो बॉल खेले उन्होंने 2 की आवाज लगाई। दूसरे एंड पे जब शर्जील को देखा, जल्दी समझ गए कि 2 रन बनने वाले नहीं।
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से हम बराह रास्त आ रहे हैं, जहां सिंध और केपी की टीमें बहुत अच्छा मुकाबला इस वक्त करती हुई नजर आ रही हैं। ये लो स्कोरिंग थ्रिलर साबित हो सकता है, जिस तरह आगाज किया है सिंध ने, क्योंकि आज दिन भर हमने देखा है विकेटें गिरती रही हैं। आज एक भी टेस्ट सेंचुरी बनी नहीं है और मुसलसल 5वीं मरतबा सिंध ने पावर प्ले में 50 से ज्यादा का मजमूआ हासिल किया है और पिछले 4 मैचों में से 2 मैच जीते और 2 में उन्हें शिकस्त हुई। और ये जिस तरह का हदफ है शाह फैसल और सिंध की जो बैटिंग का अंदाज है, खासतौर पर इनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का अंदाज, ये उनके लिए बिल्कुल मौजू है और वो अपनी रफ्तार पर खेल कर पहुँच सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन जो हैं उनकी टेक्निक काफ़ी सॉलिड है और फिर जब तक शर्जील मौजूद हैं तो रन रेट की भी कोई फिक्र नहीं। वो पहले ही 8 से तजावुज़ कर गई और हर गेंद के लिए इनके पास शॉट मौजूद है। बिलाशुबा शर्जील एक्सपेक्टर हैं इस रन चेज में। जो आपने पहली बात की उससे मैं इत्तेफाक करता हूं, सिर्फ ये चीज़ है कि आज उनका मुकाबला ज़्यादातर तवील कामत के फास्ट बॉलर से होगा जो सिंध की मिडिल ऑर्डर है। यहाँ शर्जील की विकेट के बाद शायद ये इक्वेशन बदल सकती है और अब सबको इंतजार है कि न्याज कब आते हैं। और शर्जील ने खेला, फील्डर नीचे तैयार हो रहे हैं और ले गया कैच। जी हाँ, न्याज शानदार फिटनेस दिखाई साहबजादा फरहान। एक लम्हे को लगा था कि शायद वो रन कर जाएंगे सहसर के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना पांव ऊपर उठा लिया और अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब हुए, लेकिन शर्जील अपनी विकेट बचाने में नहीं। क्या शानदार क्रिकेट का मुजाहरा किया यहाँ पर। केपी की पूरी टीम इस वक्त साहबजादा फरहान के गिर्द जमा हुई। बहुत ही मुश्किल कैच था, बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन्होंने जज किया, लेकिन उसके बाद उनका चैलेंज ये था कि वो किस तरह मैदान के अंदर रह पाते हैं। थर्ड अंपायर एक नजर जरूर डालना चाहेंगे इस कैच पर। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला बाउंड्री पे होगा। और जिस तरह मुसलसल उन्होंने 3 या 4 जंप लगाए एक ही पैर पर खुद को बैलेंस करते हुए, वो काबिले दीद मंजर। यहाँ और इससे जाहिर होता है कि कितने फिट हैं और कितनी लौच लचक है इनके जिस्म में। आज इनसे शर्जील का कैच गिर गया था पॉइंट पोजीशन पर पहले ही ओवर में, लेकिन इस बार उन्होंने उस गलती का मुताबा कर दिया। शर्जील खान कल के सेंचुरी मेकर आज 17 से आगे नहीं बढ़ सके और ये बड़ा नुकसान है सिंध को। 55 पर 3। यस, अब ये स्टार बैट्समैन आए हैं। विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद खेलने के लिए। मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है ये सरफराज के गिर्द ही सिंध की ज्यादातर घूमती रही है। अहम इनिंग्स खेली हैं उन्होंने, अपनी टीम को दूसरी पोजीशन दिलाने में इनकी फॉर्म का बड़ा कलीदी किरदार है। 35 बरस की उम्र, 3951 रन, 29 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी सरफराज। लेकिन कहना होगा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खालिद उस्मान का, जब वो आदिल अमीन को लेकर आए शर्जील से छुटकारा पाने के लिए। और सरफराज अहमद जो हैं आज इनके जहन में ये भी हो सकता है कि नॉट आउट जाएं और अपने T20 के 4000 रन भी मुकम्मल कर लें। 41 रन दूर हैं सरफराज इस कारनामे से। तो न्याज खान जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 5 विकेटें ली थी, सिंधी उस दिन रिसीविंग एंड पर था, उनको अब बॉलिंग करने के लिए लाया गया। लंबे लंबे फास्ट बॉलर
खैबर पख्तूनख्वा ने इस सीजन में मुतारिफ कराए हैं। यहाँ क्योंकि फास्ट बॉलर ज्यादा रन नहीं दे रहे थे, बाउंसर कर रहे थे, तो शर्जील ने ये $1 मिलियन शॉट खेलने का सोचा ऑफ स्पिनर के खिलाफ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैच से पहले जब खालिद उस्मान से बात हो रही थी तो उनकी आंखों में चमक थी और उन्होंने बताया कि वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अब वो बिल्कुल सिचुएशन उनके हाथ में आ गई है शर्जील के विकेट गिरने के बाद, जहां अपने फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल वो मौका दें कि सिंध के बैट्समैनों पर अटैक करें। आज ये पहली झलक इन्होंने दिखाई जब छक्का लगाया न्याज खान ने बैटिंग करते हुए पहली गेंद पर ऑफ द विकेट खासे तेज लगे हैं। गेंद जो है वो बल्ले पर लगी है, ना कि बल्ला गेंद पर सरफराज अहमद का। थोड़े से नाखुश नजर आए खालिद उस्मान, वो सर्कल में रन नहीं देना चाह रहे थे सिंगल। शर्जील ने जब बॉल स्ट्राइक की तो उन्हें एहसास हुआ कि बल्ले के बीच में तो नहीं आई। यहाँ देखिए 1 2 3 जंप्स और फिर खुशी का इजहार। शर्जील जब ये बाहर निकल कर भी खेलते हैं, जब ये चार्ज करने के लिए जाते हैं तो ये पूरा जोर नहीं लगाते, आमतौर पर टाइम ही करते हैं, इसलिए दूसरों से बहुत मुख्तलिफ बैट्समैन है। यहाँ भी इन्हें पूरी कुव्वत सर्फ नहीं की थी। अच्छा शॉट, 1 रन और दूसरा भी हासिल कर लेंगे। इमरान को दबाव में लिया साद ने। साद बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। साद पिछले साल ही गेंद को पेस का अच्छा इस्तेमाल किया। पिछले साल केपी के खिलाफ ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी बैटिंग की थी। इमरान खान कोशिश पूरी करते हुए। बॉलर जाहिर है कि ज्यादा खुश नहीं थे। इमरान इनके भी अपने अंदाज हैं क्रिकेट खेलने के। मिस फील्डिंग, इतने कम रन के साथ आप ऐसी गलतियां बार बार नहीं कर सकते। मुसलसल दूसरी मिस फील्डिंग हुई। नौजवान पेसर न्याज गेंद पर, इस बार आमिर अजमत गेंद का रास्ता नहीं रोक सके। अब समझते हैं विकेटें लेना होंगी ऑल द वे या फिर कंटेन किया जा सकता है इस पिच पर 148 में। सिर्फ 7.14 की रिक्वायर्ड रन रेट है तो विकेटें जरूर लेनी होंगी, क्योंकि सिंध की बैटिंग भी डीप है और बड़े हिटर भी हैं इनके पास। विकेटें ही यहाँ पर कलीदी किरदार हैं। बल्ला पहले था साहब, बल्ले की बड़ी वाज़ेह आवाज आई थी और बल्ला पैड से बहुत दूर गेंद से लगा था। क्या ऐसा तो नहीं कि जब बॉल बल्ले से टकराई तो उस धमक से बल्ला वापस पैड से जा टकराया? देखते हैं रिप्ले में। ताकि एक ही वक्त पे इंपैक्ट हुआ दोनों बैट और बॉल का। लेकिन अंपायर जो है उन्होंने पूरे वसूख के साथ उन्हें इशारा भी दे दिया था न्याज को कि बैट टकरा गया, और यहाँ पे भी जो आवाज आई थी वो लगा था कि जैसा बल्ला गेंद को ही लगाओ, बल्ला पैड से भी लगा है, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा ओवर किया है, कोशिश की है कि नपीतुली बॉलिंग की जाए इस ओवर में। साद अच्छा इंप्रेशन छोड़कर जा रहे हैं। 62 मजमूई स्कोर 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। $62 for 3 after 8. Rebuilding process. Hits hard and hits wide. Should be 4. Should be 4. It is. Good call, Sikandar. A bit of misfield on the boundary line.
It was hit so hard by Saad, then even the best couldn't stop it. That's Amir Azmat, very fit cricketer. He's not feeling well, not 100% Amir Azmat. Lately, the pitch has been just giving us scores around 140s, 150s, fighting totals. Keeping that in mind, this is even Stevens at the moment. You'd still give Sindh the upper hand because they're chasing. That's 1-2. They are very close. 81 runs of 70 balls. Things can change very quickly out here. We've seen that. This man can actually help them. He's tailor-made for the situation. When you need almost run a ball, he'll just push the ball around, and he'll also make his partner run a lot. You'll hardly see a dot ball around him. He has this ability to turn ones into twos. Kingdom Alley. Go onto their official Facebook page and you get a chance to win prizes. Can be the next winner. There you go. Just taps it around here and there. Yeah, also the thing that goes in Sindh's favour is that he's playing with Saad Khan, who's a youngster who can run well with him. That is the sort of support that Sarfraz would be hoping from the other end. He's a good player, I tell you, Saad Khan. I don't want to jinx him, but he is definitely a talented player. Current rate 7.8, required 7.07. Everything is in balance. Wickets. Good run. You see, this is what I'm talking about. He'll push his partner. Played it slightly to the right of that field at mid-wicket and extracts that single. End of the over. 9 gone, 70 for 3. It's lovely to see families, kids coming in numbers. That far stand on the other side is quite full, I tell you, 35% of it. See, and you'll see more and more people coming in. And it's probably wish that ATS Southern Punjab was doing very well. They can make it to the semis. That's their home ground. It's the time of the year when the nights get very pleasant. Here we go. Ehsanullah aborts his run up. And Khalid Usman has brought back his ace bowler, Ehsanullah, because he knows if he can get the wicket of Sarfraz here, that will put them in a commanding position in this game. Sarfraz Ahmed is such a handy man to be in this position for Sindh. He knows all these situations. He's been around for a long time. He looks determined. He looks very fit. He wants to win it for Sindh. 2 overs, 2 wickets, 8 runs for Ehsanullah. Nice drive. It's so important to understand what's required from the batting unit at this stage of the game. You don't need to be flashy in terms of stroke play. And you know that any wicket here will dent your plans heavily. This pitch doesn't allow you to settle down immediately. And once you get yourself a start, and in this situation I'd say if you face 16 deliveries like Saad, you're in. Your eye is in. You don't want to waste that. I missed it. Trying to stop that single. Kamran Ghulam there. Sindh must learn something from KP's side, because KP, when they were batting, everybody was looking to score big runs, and this is not the type of pitch, as you just mentioned, that will offer you runs right away. KP batters were in a hurry,
They wanted to come and go big. They were lucky that they got few sixes in the end, and that got the total to that 140 or something. 76 of 64. Which way is it going, Sikandar? It's very much with the batting team at the moment. So I'm just very interested in knowing a little more about Sindh side. I know that you like their way of cricket. You like their balance. Tell us more about what you like in particular about them. Say something good about them. I'm not. They're playing the poorest cricket. They're not a good side. A very good side. Actually, if you come to think of it, they've got two bowlers who've got good swing. That's Sohail Khan and Mir Hamza. They're using the new ball well. They've got their mystery spinner Abrar. Saim Ayub can do part-time. Plenty of options. Lots of left-handers though in their side. When you talk about batting, Sharjeel, Saim Ayub open. Then comes their captain Saud Shakil, then Saad. Danish Aziz is not playing in this 11. But lots of left-handers. And they're a very good side, jokes apart. But today, in this game, I think they will miss Anwar Ali. Because he's not fit, he's not in the side. He will be missed at that number of 6 or 7. Because we know what he's capable of. Well, you just hope that they don't need him. Because it's pretty much in control, 7.7 runs and over. You need him when you're talking about 11, 12 runs and over. And that too also in the last 5. Good shout. It's pitched outside leg, has it? Yes, it has. Oh, that was close. But yes, the only thing that could have saved him is pitching outside or inside edge. Pitched was all right, but that inside edge have saved him. Good decision by Zamir Haider. How impressive has this man been? There was a moment, Ali, we noticed that we saw Haris's wicket, then this one. It is variable bounce. This one kept low. That's how Haris lost his wicket as well. And then two-paced, as we got to know about it from the batters who played earlier. You give him width, it's going to give runs away. Ten overs gone, 76 for 3. As a comparison there, the hat-trick right in the 20th over, first one of the national T20 this season. Left arm round. Spin in operation. Left arm round. You're talking about the pitch. It's been excellent. But there are a few patches on this surface especially that you were talking about, keeping low and holding up a little. Surface is all fine, but those couple of patches on it. When the ball hits that patch, it keeps low and holds up a little. That is what you were talking about, the wicket of Haris. That hit that patch and it kept low. And when the wicket is uneven, then it's keeping low. It's the most toughest for the batters to negotiate. Spin for the first time, Khalid Usman, 68 wickets, best of 5 for 26. A very good all-round cricketer he is. That's his go-to shot. Sweep. Very strong with that, against spin especially. He plays sweep for living, Sarfraz Ahmed. So good with that. So quick onto his feet. Quickly onto the back foot. This man is very talented. Sindh would want him to stay till the end alongside Sarfraz Ahmed.
They're in a very commanding position at the moment, 69 of 57, 9 out of 10 times you would think that they would make it. KP is looking for a wicket. This partnership is 24, threatening. Khyber will try to put pressure on them by choking up the runs as much as he can. Just that way. So that enforces a big shot from somewhere. Well, Sindh must not get frustrated because the match is in control. It's not that they're chasing a big total. They can afford these singles and twos, dots even at the moment. Just don't get frustrated. 11 gone, 80 for 3 Sindh. Another good all-round cricketer, Mohammad Sarwar. Very strong man. Khalid Usman is looking worried because he knows that this partnership is building and can be a very threatening one. They need to break it to make a comeback in this game. They're never out of the game, this KP side. They're such a big side. They won all the championships in Pakistan's domestic. Let's have a look at the record. 12 wickets, early days in his career, Sarwar. Yeah, there we go. It's not that easy. The medium paces also will get you in a bit of bother. They're not easy to put away because you don't get pace. Although he runs very well, Sarfraz, but you got to be very careful at the non-striker end because he has a habit of saying yes, just taking those couple of steps right away. Come on, yes, gone. Very full on to the toe end. Sarfraz not really happy with that call, but he's got to walk. That's what medium pacers and part-timers can do to you. You look to score against them, and they will strike. That's not the Sarfraz we know. Against the run of play. Maybe hitting outside. It's questionable. But what about the choice of shots? Shot of the Sarfraz. Very strange. They were in a good position. There was no point. He's not liking it, rightly so maybe, but he cannot blame anyone but himself. It's 80 for 4. Faraz Ali, the new batter in, replacing Sarfaraz Ahmed. It's a huge responsibility on Saad now to make sure that he doesn't go at this stage, because you don't want two new batters at the crease. What a great side this KP is. They've got so many match winners in the side. Players who can deliver at the right time. Faraz Ali, 60 runs early days in his career, best of 32. These two youngsters have got a job to do.
Let's have a look at Sarfaraz's wicket, just the point of impact, because he was a little unhappy with that. It's a very full delivery. Oh yes, impact seems to be outside off, and that is what just didn't go down well with Sarfaraz. What about the shot? The choice of shot selection. We don't expect that from somebody like Sarfaraz Ahmed. Oh, there's a chance again. Chance. Now there are overthrows. Oh, that is very, very sloppy. Good game awareness from the two batters there. Pressure definitely on them. These two young batters. Look at that. Didn't go that far. Easily done in the end. All is well. That'll go. Oh, brilliant stop from Senior. Well done there. Commitment levels. Wonderful work. And when your senior pro is diving around like this, it means you're in business. You're not giving it up. That is excellent. Top work from Imran Khan Senior. He's just a great man to have in your side. Always into the game, always trying, always giving his 100%. Good over. Server was brought in to break the partnership, and so he did. 83 for 4. खासी गहमा गहमी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। मर्द खवातीन यहाँ बैठे हुए हैं फ्लड लाइट्स में ये मुकाबला देखने के लिए। इस नेशनल T20 कप की दो सबसे बड़ी और इनफॉर्म टीमों के दरमियान बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सिंध की टीम गो के आगे है, लेकिन उनने एक विकेट ज़्यादा कमाई हुई है। फराज को यहाँ पर साथ देना होगा, साथ का जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब तक उन्होंने फास्ट बॉलर्स का बड़ी जमामर्दी से मुजाहरा किया, खासतौर पर एहसानुल्लाह के सामने जिस तरह की बैटिंग की दलेरी के साथ, उससे जाहिर होता है कि अच्छा टेम्परामेंट है, अच्छी टेक्निक भी है। दूसरा रन लेने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ये पूरी नहीं होने दी एहसानुल्लाह ने। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उसका जवाब नहीं आज की शाम। मरीना जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकाबला जा रहा है। अभी भी आप किसी एक टीम को नहीं पिक कर सकते। जिनके पास बैटिंग मौजूद है, अभी साथ भी मौजूद हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। केपी बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लाजवाब फील्डिंग कर रहा है। टक्कर का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। बाहर निकले थे और यहाँ रन आउट का एक खतरा हो सकता था, ये सवाल उठाया है टीवी अंपायर के सामने। विकेट कीपर ने पूछा था, लेकिन बहुत ज्यादा पूरे एतमाद नहीं थे। साद ने भी यही इशारा दिया है फराज को कि मैं पहुंच गया हूं, एक बार चेक जरूर करेंगे। और इसने कोई ज्यादा कन्विंसिंग अपील की नहीं, बस आनी अंदर है, कोई मसला नहीं यहाँ पे। लेकिन अच्छे तरीके से पकड़ा, एक हाथ से विकेटों के पीछे खड़े रहे, गेंद का इंतजार किया कि शायद वो खुद ब खुद लग जाए, डायरेक्ट हिट। विकेट कीपर ने अच्छा करतब दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल करतब तो है इनके पास। अक्सर जब इनके आसपास गेंद जाती है अपना ग्लव उतार के फौरन भागते हैं। प्रोएक्टिव कीपर है ये, इसमें कोई शक नहीं।
आदिल अमीन का ये तीसरा ओवर है, अब तक सिर्फ 14 रन उन्होंने दिए हैं और शर्जील खान की जो प्राइज विकेट थी वो भी हासिल की, जिसके सबब वापस आने का मौका मिला इस मैच में सिंध को। दोनों मैचों में शर्जील खान को आदिल अमीन ही आउट करने में कामयाब हुए। स्पिनर तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट, ज्यादा फ्लाइट नहीं देते। और थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन है जिसकी वजह से गेंद लेफ्ट हैंडर्स को अंदर आता है। यही वजह है कि ऊंचा शॉट खेलने इनको मुश्किल हो जाते हैं। उस राउंड आर्म एक्शन के सबब इफ्तिखार अहमद से खासे मुतासिर लगते हैं। जहां तक बॉलिंग एक्शन का ताल्लुक है, आदिल उनका ओवर ज्यादा रहा, 88 पर 4। आने वाले खिलाड़ियों में सुहेल खान अच्छी बैटिंग करते रहे हैं। आसिफ महमूद जो हैं ये भी ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, जिनने आज हैट्रिक की और इम्कान यही है कि इनमें से ये बारी तो आएगी बॉलर्स की। 5 मुस्तनद बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया सिंध की टीम ने, इसलिए पावर प्ले के बाद कदर मोहतात होकर खेले मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। हवा में और गेंद गैप में भी चली। साहबजादा उछले जरूर थे लेकिन इसका कतई मौका नहीं। इनसाइड आउट शॉट खेला फराज ने। इमरान जूनियर की गेंद इतनी बुरी नहीं थी लेकिन अच्छा शॉट खेला फराज ने, और कवर के फील्डर बहुत आगे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा कनेक्शन हासिल होता तो ये चौके की तरफ जाना था, लेकिन पार करने में कामयाब हुए। शहजादा फरहान काफ़ी आगे सिंगल रोकने के लिए खड़े थे। अमूमन इमरान जूनियर अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनसे यही उम्मीद होगी इस वक्त भी। हुक करना चाहते थे और गेंद किनारा लेती हुई गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से। इमरान जूनियर के खिलाफ आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि टॉप एज पर उनने बाउंड्री कंसीड की हो। पिछली गेंद की वजह से थोड़ी लेंथ पीछे खींची और 2 लगातार चौके हासिल करने में कामयाब हुए फराज। अच्छा राइज कर रहा था गेंद, सिर्फ कनेक्शन हासिल करना था, तो जरूर हुआ है इमरान जूनियर को। ये अच्छी लेंथ यहाँ पे नहीं साबित हुई। यहाँ पे हमने देखा जरूर है कि बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किल हो रही है आगे की गेंदों पे भी, हार्ड लेंथ पे। यहाँ ये बेहतर लेंथ है, इस बार बाल बचे, सरप्राइज किया अपनी रफ्तार से भी। बहुत अच्छा गेंद था ये, हार्ड लेंथ पे तेज गेंद था और ये भी राइज करता गया है। हारिस ने जहाँ कलेक्ट किया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर ढीला पड़ गया खैबर पख्तूनख्वा तो सिंध यहाँ बाजी मार जाएगा। फराज और साद दोनों बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि हर चीज़ की जो ज्यादती है वो बुरी होती है और ये बाउंसर्स जो हैं बहुत फेंके हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आज इमरान जूनियर ने, और उसी के सबब उन्होंने ज़्यादा रन्स भी दिए। DICC डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है अक्टूबर के महीने के साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात में। इसके मुकाबले होंगे जिसमें दुनिया के 6 बड़े ममालिक की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी, पाकिस्तान और भारत भी, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया ये भी शरीक ममालिक हैं। ये लगी है पैड पर सीधी जाकर स्टंप्स के सामने और विकेट हासिल हो गई। और क्योंकि जो वजन था वो बैकफुट पर ही था, मुसलसल बाउंसर्स फेंके जा रहे थे और हैरान करके रख दिया अपनी इस लेंथ से इमरान ने साद को।
ये अच्छी डिलीवरी है, बहुत अच्छी। पेस चेंज की थी, हल्का सा कट भी हुआ गेंद। वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा उछलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे साद खान, लेकिन नुकसान उठाना पड़ेगा सिंध को। अब ये बड़ा धचका लग गया है। 93 पे 5। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आसिफ महमूद ये बैटिंग का हुनर भी जानते हैं। आज हैट्रिक की है और अब इन्हें अपनी बैटिंग सलाहियतों के इजहार का मौका दिया है हेड कोच गुलाम अली ने। वो चाहेंगे कि ये डबल करें, बॉलिंग के बाद बैटिंग भी अच्छी करें, लेकिन इमरान जूनियर ने बैक ऑफ द हैंड जो स्लो डिलीवरी फेंकी, उसका साथ के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत बेहतर फिनिश किया इस ओवर को, जिसकी इब्तिदा 2 बाउंड्रीज से हुई थी। 98 पे 5। अपने ओवर्स में ज्यादातर शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे, बाउंसर्स और बैक इन लेंथ, लेकिन ये बैक ऑफ द हैंड जो है स्लोअर वन किया और जल्दी खेल गए, विकेटों के बिल्कुल सामने थे। जहाँ ये शुरू हो गया है, ये शाम की सैर शुरू हो गई। आज समोसे खाए हैं तो उसका हक अदा करना पड़ेगा इन तीनों को। मुश्किल बढ़ गई है काफी सिंध के लिए। सरवर अफरीदी काफी यूटिलिटी क्रिकेटर है। ये अच्छा रब्त है और लाजवाब शॉट, अच्छा काम। आसिफ जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे ऑलराउंडर हैं और लेंथ को बड़ी जल्दी उन्होंने रेड किया और बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को दे मारा मैदान के बाहर। किसी खाते में नहीं लिया सर्वर को। यहाँ पे एक बार फिर ये कहना बनता है कि ये लेंथ, इस तरह की पेस जो सर्वर के पास है, उस रफ्तार पे, इस लेंथ पे कोई थ्रेट नहीं होता। बआसानी फ्रंट फुट पे अच्छे बैलेंस के साथ ये छक्का हासिल करने में कामयाब हुए। इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, जैसे आपने कहा, बल्ले के साथ भी। यहाँ ये गेंद के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उसे लौटाने से पहले अच्छी वापसी की, लेकिन शॉट बड़ा ही दिलकश था। फ्रंट फुट से वहीं से उठाने में कामयाब हुए। बैटिंग टैलेंट है आसिफ में। प्लेस के साथ सेल्फी तो देखते नजर आए हैं। आज पहली दफा देखा कि बॉल के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं। तो कहते हैं अंदाज अपना अपना। जिस चीज का भी मौका मिल जाए फायदा उठा ले। दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बन सकेगा। ये मोहम्मद सरवर का जो बॉलिंग का अंदाज है, इनको देखकर हंसी क्रोनिया याद आ जाते हैं। जिस तरह ये पहुंचते हैं मटक मटक कर बॉलिंग क्रीज पर और फिर विकेट टू विकेट गेंद को कट कराने की कोशिश करते हैं, कई बार सीम अप करते हैं तो गैर मुतवक्के तौर पर तेज आती है बैट्समैन के लिए। लेकिन फराज को अब आखिर तक खेलना जरूरी है। सिंध अभी भी अगर पूरे ओवर उनने खेल लिए तो इस हदफ तक पहुंच जाएंगे। खतरनाक बॉलर है, मिक्सअप अच्छा करते हैं मोहम्मद सरवर। यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को। प्रेशर सिंध पे आया हुआ है,
लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पीछे की लेंथ पे दोनों मार लेंगे बल्लेबाज। आगे हार्ड लेंथ पे, गुड लेंथ पे पैचेस हैं जहां से बॉल कट हो रहा है। हमें भी देखने को भी मिला पहली इनिंग्स में भी, इस इनिंग्स में भी। वहां पे अगर पिच करते हैं, पेस कम रखते हैं तो फायदा उठाया जा सकता है। अभी तक जो है ये न्याज को वापस नहीं लेकर आए। उन्होंने एक ओवर में बिल्कुल भी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। ओ बॉल, शायद यही वजह थी कि सर्वर की गेंद नीचे रह जाती है और फराज अपना बल्ला जो है वो बर वक्त नीचे लाने में कामयाब नहीं हुए और आज विकेट टू विकेट बॉलिंग के नतीजे में विकेटें गिरी हैं। इस बार ज्यादा दोष आप दे नहीं सकते फराज को। लेंथ जो थी वो बैकफुट की थी लेकिन बाउंस इतना मिला नहीं और डिसीव हो गए बिल्कुल। और अच्छी कप्तानी की है उस्मान खालिद ने, अच्छा रोटेट किया है खालिद उस्मान ने अपने बॉलर्स को भी, और एक्सिक्यूशन बॉलर्स की जानिब से बहुत अच्छी रही। एक और नुकसान और बड़ा नुकसान। सिंध अब मुश्किलात के घेरे में। 13 बना के वापस फराज, 105 पे 6। लो स्कोरिंग पिच पर अब सिंध के बॉलर्स की आमद है। सुहेल खान पहुंचे हैं। सरवर आफरीदी खासे कारआमद साबित हुए। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। 45 बेहतरीन स्कोर है, लेकिन ये अगर आज ये 20-25 भी बना जाते हैं यहाँ से तो इनकी टीम जीत जाएगी। या सुहेल खान शुरू में विकेट पर रुकने की कोशिश करेंगे या अटैक पर जाएंगे? और अटैक करने की कोशिश की, पहली गेंद से ही बार एतमाद से नहीं खेल सके और मुश्किल में ले आए। यहाँ गेंद जो है वो विकेट कीपर के एंड पर पहुंची और सुहेल खान क्या पहुंच सके थे या नहीं, और अंपायर जिस तरह इशारा कर रहे हैं ऐसे लगता है कि आउट हो जाएंगे सुहेल। मोहम्मद हारिस भी बहुत पुरएतमाद हैं कि उन्होंने अपना शिकार हासिल कर लिया। सुहेल खान अटैक करने गए थे। ये देखिए एक बार फिर वन हैंडेड गैदर, बहुत दूर रह गए सुहेल खान। अब पे शॉट थी, कैच से बच गए लेकिन रन आउट हो गए, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये खजूर में इससे अटके के विकेट कीपर का ग्लव वर्क बड़ा ही कमाल था और कलेक्शन भी। सुहेल खान थोड़ा सा सहल पसंदी का शिकार हुए, सिर्फ एक गेंद के मेहमान साबित हुए। 106, 7 खिलाड़ी आउट। साद खान ने 31 रन बनाए, डबल फिगर में आए सऊद शकील, शर्जील और सैयद फराज अली भी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो ठहर नहीं सके इस खैबर पख्तूनख्वा की बॉलिंग अटैक के खिलाफ। अब अबरार और ज़ाहिद 2 स्पिनर्स बाकी रह गए हैं और अब मुश्किल होने लगा है। हालांकि 30 गेंदों में 42 रन जो हैं ये इन दिनों जो है टीमें बहुत खुशी खुशी बना लेती हैं अगर कोई एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन विकेट पर मौजूद हो। यहाँ आसिफ से अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उनका मुकाबला एहसानुल्लाह से है जो एक बड़ा खतरा बनकर मुंडलाते रहे।
हमेशा बाउंसर की तवक्को रखते हैं कि आएगा, लेकिन फिर भी निगोशिएट कर नहीं पाते। लंबे लंबे हाथ, लंबी लंबी टांगे हैं सानुल्लाह की। सुहेल का जो लेग वर्क था वो खासा सुस्त था। देखिए काफी देर के बाद दौड़े, इसीलिए पीछे रह गए। अच्छी क्रिकेट नहीं थी। सुहेल खान बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। आखिरी गेंद था, पहले उन्होंने जारहाना शॉट लगाने की कोशिश की, उसके बाद जबरदस्ती के 2 रन। अगर डिफेंड कर लेते तो आसिफ ही स्ट्राइक पे रहते। लेकिन जो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस हैं, उन्होंने एक बार फिर ये कर दिखाया कि उन्हें बड़ी सलाहियत है, न सिर्फ ये कि विकेटों के पीछे बॉलर की गेंदें कलेक्शन करने की, बल्कि जो फील्डर आउटफील्डर्स की जो थ्रो है उसको कलेक्ट करना भी एक आर्ट है। और इनको आज की शाम देखकर लगा है कि इन्होंने फाइन आर्ट बना दिया है उसको। बिल्कुल थ्रो विविड थी, लेकिन अगर आप देखें तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था कि विकेट कितनी दूर है। उनका स्टांस बहुत स्टेबल था, जरा सा भी नहीं हिले, सिर्फ अपने हाथ को स्ट्रेच किया। ये देखें, पेस बहुत जरूरी होती है इस तरह में, आपको अंदाजा होना चाहिए कि विकेट कहाँ पे है। यार एक हाथ जो है, अगर ये 2 हाथ लेकर जाते तो उसमें वक्त ज्यादा लगता गेंद को फिर वापस जो है हाथों गैदर करना और विकेटों की तरफ लाना है। तो एक हाथ जो है वो ज्यादा जल्दी हरकत में आ गया था, इससे इनके लिए ताली बजेगी। आज बहुत ही फुर्तीले हैं, मुस्तैद, फिट। बैटिंग में भी इनका एतमाद बढ़ेगा जब ये इस तरह के शिकार करेंगे अपनी टीम के लिए। ओह, एक बार फिर गेंद तकरीबन उनके चरणों के ऊपर उठ गई थी। जिस तरह वेस्ट इंडीज के 80 के दहाई के जो फास्ट बॉलर थे, यहाँ पाकिस्तान में टोनी ग्रे आए थे 1986 के दौरे में, वो इस तरह फैसलाबाद की पिच पर इस तरह की बॉलिंग कर दिया करते थे वेस्ट इंडियन बॉलर्स। हार्ड लेंथ से उठाए ये गेंद, और ये बताता जरूर है कि सानुल्लाह जिस तरह के टेक को हिट करते हैं, तवील कद के मालिक जरूर हैं, लेकिन ये भी एक आर्ट है। आगे से गेंद उठाते हैं, बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रंट फुट पे कमिट करना। देखिए ये नोज और टोज वाली लेंथ है, और वही इनकी कामयाबी का राज है। और ये इतना नफसियाती तौर पर ये इतना बुरा असर होता है बैटिंग लाइनअप पर कि आप बैटिंग ना भी कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में तो मरीना आप सोच में पड़ जाते हैं। बिल्कुल प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इतने लंबे कद के बॉलर को देख रहे होते हैं जो अच्छा बाउंस हासिल कर रहा है, तो आपके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा होता है कि बैकफुट पे तैयार रहना है। लेकिन ये बहुत अच्छी बॉलिंग है। आगे आके उन्होंने ऑलमोस्ट यॉर्कर की अटेम्प्ट की। स्मेल द लेदर। अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन्स देकर गए और इस तरह अपना आज की शाम का काम जो है वो पूरा कर लिया है सानुल्लाह ने 108 के साथ। Now look at that worm, just dipping. Just at the time when it matters, it's dipping. That's not a good news if you're a Sindh fan. But they cannot blame but themselves to be in this position they are. They've lost 7 wickets, 108 at the moment, requiring 40 more runs off 24 deliveries. Looks like a mighty task at the moment. Back of the hand again, wide this time. Shah Faisal alongside me. What do you make of this performance from Sindh batters? We knew it's not going to be easy against this 4-pronged pace attack of KPK. And you just saw those worms. Sindh worm is heading in the wrong direction, but at the same time, 16 overs onwards, the KP worm really propelled upwards.
That's the difference that may just prove decisive. Nicely clipped, will only be one. But nothing can take away the effort that KP bowlers have shown. They've been helped by the pitch. We saw how a couple of wickets were lost, the ball keeping low. It's always difficult. I mean, you can always negotiate the swing, but what about when the ball keeps low? That is the time, that is trouble for the batters. He's been wonderful. Khalid Usman, the captain of KP. He's actually been sensational because the changes he made, he brought on Adil Amin to get rid of Sharjeel. Everything he touched turned to goal today. If you're right about that variable bounce. That's big, forget about it. It's in the stands. That is a big one from Asif. He's showing that he's got the potential. Wonderful hit. Wow, the hat-trick boy. This is his second six. This one almost landed on the first floor into the Sindh changing rooms. Slow delivery, picked it nice and early. Look at those long levers swing through the ball. It's going, and gone. Almost getting predictable. Imran Khan Jr., this was not the first time that he bowled that back of the hand delivery. And he is deposited into the stands. He can bat. He's in this team in place of Mir Hamza, who's got to fill those shoes. And he's doing it all right at the moment. Anwar Ali, I beg your pardon. Hit hard again. It's not over until it's over. 31 of 21. We did praise KP a lot, but we have to say that some of Sindh's dismissals were a bit sloppy. That last one from Sohail Khan, you saw it from side on. There was a comfortable two, and he never pushed for the first run, and all of a sudden decided he wants the second one. He almost made it. It means that there were two. So mistakes made by Sindh as well in their batting innings. Mir Hamza went for 21 in 19th over. He needs to make amends here. Just stay there. That will work because Asif is looking good. Oh, that will run away. That is an excellent timing of this boundary. Wonderful. It's working for Sindh. This partnership is now 19. Well, this game is not over yet. Two straight from Imran Jr. This is poor bowling. But give credit to Mir Hamza. He's got enough bat on it to go past Imran Khan inside the ring. And this has been such kind of game all day. Goes one way, then the other. And these two blows have brought Sindh right back into the game. This is what happens when best play the best. These are the best players of Pakistan domestic circuit playing against each other. You're bound to see this excellent game of cricket. And it's happening. It's happening right here at Multan Cricket Stadium. It's not over. Good cricket. Very good cricket. That should be the role for Mir Hamza. To stay there. You will find a boundary here or there. But if you get bowled out, it's not going to help. It's good batting from Mir Hamza. You could see that he was ready for that slow delivery. Good rotation of strike. That equation of 16 of 19. Sindh, like you said, Ali, if they don't lose wickets, they should romp home from here. Pressure on both sides. The fielder at third is inside the circle. Fine leg now inside the circle. We've seen that Asif Mahmood has got the potential to go big. What can Imran do? Nicely done, nicely played. There is protection, just one run. That is the end of 17th over. It's 123 for 7, Sindh. Tension, pressure on both the camps.
Cannot afford to lose this game here. The table is so tight. Good crowd in, very good crowd in. And I'm sure as the tournament progresses, more people will come, especially these night games. We saw excellent crowd yesterday. They've come in numbers tonight also. And I'm expecting a full house in the final. Crowd is bigger than yesterday, and we expect the momentum to continue to grow until the finale. Magnificent cricket has been played in this championship. The entertainment has been non-stop. The action has been just superb. Not finished yet for the night. Senior back. Oh, that is a nice hit. Nice hit. That has gone right between the two fielders. This is a little cameo from Asif Mahmood. He's dealing in boundaries. Crack of leather on Willow. Music to the ears for Sindh. Look at that. Back of a length, slow delivery, set up. But that sound from Asif Mahmood's bat was so sweet. The length. He's searching for that length, Asif Mahmood. You can just tell whenever he's in the position. You can tell that he's searching for that length. He's been provided with one, and he's punished it. 21 of 17. Is it going to be 3 and 3 for KP? They're not used to that. Oh, that's firmly hit, I tell you, but straight to the fielder. 3 and 3. What do you make of that? Yeah, they're not used to it, as you said. It's surprising, it's shocking. They're such a good side, this KP side, that we don't expect that from them. What has jinxed them? I don't know, you got to find the person. It's not me, it's not me. Well, it's not finished. Imran Khan may have another ideas. Look at these glum faces. Third inside the circle. Where is he heading? Wait, is the call? There is a chance. Right call at the right time. Ula, ula, ula. That's what shouts were there from the field. The KP fielders really closing in. They don't want Mir Hamza to get off strike. I like that. Ula, ula, ula. What was that? It's hit, hit, hit. And they needed a direct hit, but Hamza got back in strike. What I'm liking about Mir Hamza's batting is his calmness. And that's really giving confidence to Asif as well. Yeah, there is one. Good cricket, good cricket. Oh, there's a misfield. Lucky that they didn't go for another one. You were talking about Asif and Mir Hamza's role. Just when Sohail Khan ran himself out, the disappointment was there on Asif, because he knew that he's got the potential. He needed partners. There was a chance. Direct hit might have made things interesting. So the disappointment at that moment to Asif showed that he's got the potential. He's got that confidence in him. He just needs to stay there. This is where sometimes the freshness in your squads, they do help. They're more hungry. They have a point to prove. And these tense games with such a big audience, not just in the stands, but also it's a prime-time viewing here. Going live on PTV Sports. This is the stage for the youngsters. Oh, that is excellent. That is beautiful. That is firm. That is top-class cricket from Asif. He's come up as a surprise package from Sindh to KP. He's absolutely set the stadium ablaze with his stroke play. And it's calculated. It's not just slogs. It's the perfectly good cricketing stroke. Low full toss. He had the area in the mind. This is very, very impressive from young Asif. And pretty ordinary from the senior. Gentle full toss outside the off stump is always going to go at these times of the match. That is not good cricket. The equation is 15 of 13. Take a one, take single.
You've been gifted one and another one. What is happening, KP? They're under pressure. Look at Asif scrambling at the non-striker end. He dropped the bat, and just like a sprinter, he's scrambling to the finishing line. This is what I was talking about, the hunger, the desire to become a star. This is absolutely phenomenal action here. And we don't say this normally, but KP seems rattled. Look at Asif scrambling, just like a sprinter. That is commitment level. That is what you want to see from your young players, upcoming players, that commitment level. Something to do for the team. And if you're able to pull off these matches, these sort of performances in crunch games, you definitely deserve respect. You earn it in the camp. Senior to bowl the last delivery of the over. Oh, magnificent. That is excellent cricket from Mir Hamza. Very, very sensible. 18 gone, 136 for 7. Tension definitely on Khalid Usman. I think he's decided that he's going to bowl this 19th over, which is always a very, very important game over. He's decided that he's going to bowl that, most likely, or no, he's decided against it. He's brought Server to bowl that over. Abdur Rahman, Rifatullah Mohammad, they're tense. Like I just said, we don't normally see KP in such a worried state. Is it going to be Khalid Usman? Is it going to be Server? Sindh are on the edge of their seats as well. It is a close game, tense game. Look at the skipper, Saud Shakil, and look at them. He could not have asked for better entertainment today. And they've got what they wished. "12 of 12. Server has been given the responsibility. They need wickets, there's no doubt about that. Remember, Asif Mahmood is replacing Anwar Ali, who's been a massive player for Sindh over the years. And if he can have this kind of hitting prowess to go with his very impressive seam bowling, I think he's here to stay in this Sindh team at least. Probably aiming for higher. Mir Hamza to face. That's big. There is a fielder. There's a fielder. He didn't check it. He didn't check it. The ball got lost in the light. That is the only reason, because his reactions, Imran Khan Jr., suggest that the ball got lost in that light. Have a look at that. Yep, that's what he's thinking. Just lost it. Completely lost it. Server is upset. That was the opportunity for KP. Mir Hamza, who so far was content with giving strike to Asif, I thought he just came in my head that he can just hit a 6 and be a hero himself. They want to do it in this over. This seems to be the point. Asif Mahmood will now face Server. 11 of 11. What a fantastic game of cricket we're just witnessing. Good delivery. Good delivery. Right in the block hole. That is where he should be looking to bowl at this stage of the game. It was a crowd catch. It was a roar in the stands, but it was not a catch. It went through Server's hands, but it was a bump ball. But terrific delivery. This is where Imran Khan Sr. will be thinking to himself, he didn't quite execute his plans. Server is not quick. He nailed the Yorker. Fielder at third inside. There's a deep mid-wicket, deep square leg, long on in position. Deep cover also. Where is he going? That's the question. Asif Mahmood. Oh, missed out. Full toss, he's missed out on that. Probably he lost it as well. Didn't see it early enough.
but this game is going right down to the wire. You may say it's only 2 hits, but KP is not going to give it away easily. You might say this was the opportunity for Asif. Just didn't see it. And also, he just wanted to go too hard on it. 11 off 9. Again, brilliant, brilliant delivery under pressure. Don't come back, don't come back. He wanted to. Everything is happening. KP is under pressure. That's not the usual KP we know. They're just saying just relax, just relax. It's not out of the hands at the moment. You're still in the game. It's just a matter of 1 wicket. Over-exuberant Haris almost deflected the ball past him. The ball has been chasing him. And look at him. All action. Imran Khan Senior. The reason we love this game of cricket. Everything happening. Even the best can feel the pressure. Khalid Usman, very involved, very good captain. And look at the numbers of this over. 1.1. He's bowled a terrific over under pressure server. He's an all-round cricketer, a very handy one. Now he will be bowling to Mir Hamza. He has to go big. He has to go big. And he does. Straight. That is brilliant. That is out of the park. That is a massive hit. And what a time to get from Mir Hamza. He absolutely nailed this one. Cleared his front leg. And as soon as he hit the ball, he punched the air in delight. He knew that that wasn't going to stay in the park. Look at Mir Hamza. Seeing the ball soar. Length delivery for once from server right in the slot. And it went the journey. Look at Hamza. Yeah, he bowled those Yorkers so well in this over. 3 of them, then decided to go length. And that is what Mir Hamza was searching for. That length delivery in his zone, in his arc. What a wonderful partnership this has been for Sindh. 38 runs. Who would have had thought that they will pull it off? They haven't actually quite, but still they're very close. Just 4 runs away of 7 deliveries. This may give Hamza a lot of satisfaction, because remember, his 19th over went for 21. He's redeemed himself in a big way. That's good. That's good. Just 1. Will Asif come back for 2nd? Deciding against it. So very good over for Sindh under the situation. 9 runs of it. After 19, it's 145 for 7. The last 6 from Mir Hamza. What a brilliant time to get that 6. If you cast your mind back to the KPK innings, you remember what happened in the last over? Look at Mir Hamza. Telling blow. Really knocked the wind out of KP's sails. It may have felt at the time, but Khalid Usman is not giving up. And he is probably deciding to bowl himself, or is it Imran Jr.? But what I was saying, last over of KP's innings, we saw a hat-trick. Asif Mahmood came up with the hat-trick, and KP needs one, because otherwise they're out of this game. It's up to the junior. Imran Khan Jr. will have to bowl the last 6 deliveries of this match, and he needs to defend those 3 important runs for his team. Khalid Usman making sure that he's got everyone at the right area, because this is the big game. They're the table toppers. It's not been going their way in the last 3 games. And in fact, this is including this game. It's 1. So now they require 2. It's a long shot, but every time we get this close, just think about the super over. I don't think it's happening tonight. What do you think? It's not.
Just 2 of 5. They're standing up. They don't want to miss any moment of this exciting game. 27 important runs for Asif Mahmood along with his hat-trick. What a game he has had. My man of the match if Sindh wins, no doubt about that. Mid-off, mid-on, up on the circle. Asif Mahmood. One, they run one. Yes, they have. So the situation is that score is tied. And it has been an excellent partnership from these two fast bowlers. 41, back of the hand, Yorker length. All they needed was one. They got it. Scores are level. Sindh have dragged themselves out of one felt a difficult situation when Sohail Khan got himself run out. That was 106, and since then 41. Great partnership. Everyone, literally every fielder is inside the circle to stop that single, and Mir Hamza, the idea was all right. He just needs to get that bat on the ball. The fielders are in, the pressure is on, the faces are tensed. Now those faces, when they see themselves on the screen, they really love it. Mir Hamza had an almighty swing. Imran with the short pitch delivery. 3 deliveries. Everybody's inside the ring. Is there going to be a run out? Is there going to be a big hit? It's going to be a tip and run. They got 3 deliveries. There's no need to panic as such. 1 of 3. It's not that this is the last one, so they can take time. Mir Hamza, can he do it on this delivery? Junior, he's running, they're running, and they completed it. Sindh wins. That is an excellent comeback. What a wonderful partnership it has been from these two fast bowlers. 43 they scored of this 8th wicket, and they've made sure that Sindh wins this one, and they've done a wonderful job. They're happy, everyone is happy, so am I. What a great game of cricket. What fabulous entertainment as well, right down to the wire. It sees Sindh, they're relaxed. It hasn't hit them just yet that they've come through such a tense game. Smile and delight on the face of Mir Hamza. Khalid Usman and KP will have to think long and hard that how to stop the rot. 3-3 now for them. Hat-trick of defeats here in Multan. They need to change around and change things quickly. But this man, Asif Mahmood, is a star in the making, one feels. He was good with the ball, sensational with the bat. Disappointed. KP captain Khalid Usman, as you just mentioned, 3 losses in 3 games. They've just lost their way, and this is how it ended. Mir Hamza, they had to run. They completed it with quite ease. That is a sensational game of cricket we've just witnessed. Quality cricket from both sides. Mir Hamza deserves all the applause, rightly so. He deserves it. He deserves to celebrate. Wonderful. Famous bat drop. This has been an absolute thriller. Loved every minute of it. I hope you did as well at your homes watching this. Look at the Sindh faces now. The delight is coming through. What they need to do, the camp at one stage, look, they were looking for the right combinations. I think they're finding the right answers at the right time. Absolutely, I 100% agree with you. And what this victory has done is that put Sindh right at the top of the table. They go number 1 in this points table. And this is a very proud Sindh camp, because they have beaten a very formidable, very strong side of KP. No big runs, but everybody chipped in. Shajil Khan 17, 13 for Saud Shakil. Saad Khan looked really good for his 31, but it was the partnership between Asif Mahmood and Mir Hamza, 28 and 19 respectively, that seized them home, and they scored 148
inside 20 overs. KP, they bowled their heart out. Imran Khan Sr. probably would be disappointed with his effort today. But look at Ahsanullah, 2 for 16 of his 4 overs. Was absolutely sensational. Muhammad Imran Jr. went for plenty as well. With all his variations, 1 for 44. The two Imrans really not coming to the party for KPK. But this moment belongs to Sindh. Congratulations to them for making it to the top of the table. And this points table will be exciting when we get there. The match summary: Sabzada Farhan in the runs, 147. Asif Mahmood with a hat-trick in the final over. And that proved to be the difference. And with the bat as well, seeing his team home, 28 not out. Ahsanullah, hugely impressive amongst the wickets. The result, Sindh won by 3 wickets. Just a brief moment for everyone to take a deep breath. Yeah, Sindh had to chase down this small total on a very difficult pitch. They were helped by this drop catch, but runs kept on coming. And the very impressive Saim Ayub lost his wicket. There was a very good catch by Haris. Then Saud Shakil looked good, very stylish. A couple of boundaries through the covers. That was just brilliant. But Ahsanullah had all the answers. He bowled really well, bowled his heart out. Shajil Khan also looked very good, very threatening. Saad Khan, very impressive also. He's probably one of the best batters, young batters that we have seen in this tournament. Shajil Khan looked good. Luck was it on his side too. This was the moment, this was the big moment when Shajil Khan lost his wicket. It was an excellent catch by Sabzada Farhan. At this point, we all thought that KP are back in the game. But this partnership between Saad Khan and Faraz, and this shot, well, this is not something that we expect from somebody like Sarfaraz Ahmed. And this was the partnership I was talking about, Faraz and Saad. Hugely impressive. Saad kept the battle going before he lost his wicket with that slow delivery. Just misread the pace. But Asif Mahmood, he was a surprise package. Nothing can be done about this. Faraz can feel like that. Sohail Khan, at this moment, this was quite sloppy because against Imran Khan, all odds were there for a couple of runs. But Sohail was lumbering, Haris's agility, too much. This is man of the moment and man of the match. Sohail Khan. That is a top-class inning by Asif to see his team home. He was in place for Anwar Ali, and look at that shot. Force behind him, and Mir Hamza supported him beautifully. Couple of boundaries, and in the end, winning the game with this single. That is a top-class effort by Sindh. He deserves all the celebrations because they won it in style. This Sindh side is now at the top of the table. What are we going to do? We're going to take a breather. When we come back, we'll have presentation ready for you.
Hello and welcome to the post-match presentation of Match 24. And what a game we've had. Another close finish. And eventually it was Sindh who emerged victorious with 3 wickets. And once again, 2 points go to them. So back-to-back wins for them. Before I call upon the player of the match, or the Kingdom Valley player of the match, I'll introduce my guests over here. Starting from my left, Mr. William Makaneole. I've got that right. And he is a US Consul General. Thank you for joining us. And next to him is Dr. Abdul Sabur. He's CEO, Southern Punjab Cricket Association. And last but not the least, Mr. Mohammad Noman Ashraf, Sales Executive, Kingdom Valley. And for the Kingdom Valley player of the match, he got the first hat-trick of the season. And he got the valuable 28 runs of 17 balls. Let's call upon, of course, Asif. Please join us. He'll receive the check for 25,000 rupees for Kingdom Valley player of the match from Mr. Noman Ashraf. And he'll receive his trophy from Mr. William Makaneole. Brilliant knock from him. Made sure that the side wins this game and grabs the valuable 2 points in the tournament. आपसे थोड़ी बात करेंगे आसिफ. इधर आ जाइए. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है T20 में हैट्रिक लेना. ये रोज़ होता नहीं है, लॉन्गर फॉर्मेट में फिर भी हो जाता है. पहले तो उसकी फीलिंग बताएं और साथ साथ ये बताएं कि क्या प्लान था उस वक्त, उस ओवर में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज अल्लाह पाक ने परफॉर्मेंस करवाई. दूसरी बात यह है कि बस मैं सिंपल क्रिकेट खेलता हूँ और बस कोशिश करता हूँ कि स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग करूँ तेज़. तो बस यही मेरा प्लान होता है. और जब बैटिंग आती है तो बस कोशिश करता हूँ कि एग्रेसिव बैटिंग करूँ. इधर बैटिंग थोड़ी सी ट्रिकी थी और जो सिचुएशन दरकार थी सोहेल की विकेट के बाद, उस वक्त टोटली अग्रेसिव हो भी नहीं सकते थे. क्या प्लान था मीर हमजा के साथ? बस मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ और पहले मैंने इस तरह के काफ़ी मैचेस जिताए और यही है कि मुझे मेरे मैनेजमेंट पे मुझ पे बिलीव था तो अल्लाह पाक ने मुझसे करवा दिया. चलिए, कांग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट हैट्रिक एंड ऑन द विन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Asif, the Kingdom Valley player of the match. Now we'll call upon the losing captain, Khalid Usman, to join us. We'll have a quick word with him. Khalid, क्या हो गया? अचानक टीम नोज डाइव कर गई है. 3 लॉसेस लगातार हो गए. किस एरिया को ज़्यादा आप देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेसिकली हमने मैच 16 ओवर तक बिल्कुल हमारे हाथ में था और एंड के 4 ओवर में हमसे स्लिप कर गया. जो लास्ट 3 मैचेस हमारे हुए तो उसमें आप देख लें कि लास्ट 4-5 ओवर में हम 50 से 40-50 रन देते हैं. जो मेन रीज़न यही है हमारा. क्या इसमें टॉस का भी ज़्यादा रोल है? क्या आप प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे चेज हो जाता है या कहेंगे कि नहीं ओवरऑल? नहीं, आज जो विकेट जिस तरह खेल रही थी तो टॉस का कोई रोल नहीं था. मेरे ख्याल से टोटल काफ़ी था इस विकेट पे क्योंकि लो बाउंस था, सम टाइम बॉल ऊपर भी जा रहा था. तो मेरे ख्याल से विकेट पे स्कोर ये काफ़ी था हमारे बॉलरों के लिए. 5 में से 5 जीते, उसके बाद 3 हार हुई. किस तरह एज अ कप्तान आप फील करते हैं कि यहाँ से बाहर निकालना है टीम को ड्रेसिंग रूम में? जी बिल्कुल मोटिवेट करते हैं लड़कों को. अगर आप लास्ट 2 मैचेस देख ले तो हम क्लोज आके आ रहे हैं तो ये गुड साइन है हमारे लिए कि क्लोज जाते हैं लेकिन फिनिश हमारे हाथ में वो नहीं होता. लेकिन इंशाल्लाह आगे एक मैच जीतना है तो सेमीफाइनल में ही आ जाएंगे इंशाल्लाह. चलें, एक दिन सबका ऑफ है. कुछ लोगों का नाश्ता रोके, कुछ को ज़्यादा खिलाएं. एंजॉय करें अपना ब्रेक एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम. Khalid Usman, captain. Now I'll call upon Saud Shakil, captain of Sindh, the winning captain today. Saud, just the right time to peak as a team in the tournament. हाँ, मेरे ख्याल में कि काफ़ी ज़बरदस्त है और ये एक मोमेंटम होता है जो आप एंड के मैचेस में पकड़ते हो जो आपको सेमीफाइनल में काम आता है. ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी पॉजिटिव्स की बात करें, कल ओपनर्स ने गेम को फिनिश किया, आज आपके लोअर ऑर्डर ने इस गेम को फिनिश किया, तो सब टेस्ट हो रहे. हाँ, ये अच्छा चीज़ होती है कि आपकी सारी जो भी प्लेयर्स हैं वो आपको मौके पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी इस जो लेटर ऑर्डर है इधर से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था पिछले मैचों में, लेकिन ये कि आज अच्छा था कि इन्होंने फिनिश किया मैच. जब जीत मिल रही होती है तो ऑब्वियसली कैप्टन फिर मुश्किल होता है एसेस करना कि कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं. आपकी नज़र में क्या ऐसा है जो और इम्प्रूव हो जाए आने सेमीफाइनल से पहले? मेरा ख्याल है कि जिस तरह का आज पिच खेला उसके मुताबिक सारे बॉक्सेस टिक थे और ये था कि कोशिश करते रहें कुछ भी नया अगर कोई चीज़ होगी तो उसको डिस्कस करें. चलिए, वेल डन टुडे. थैंक यू वेरी मच. So Sindh wins this match by 3 wickets and takes those 2 points, and that also concludes the presentation. Thank you very much, Sikandar. And this is interesting reading. Sindh has leapfrogged Khyber Pakhtunkhwa, although they played 1 game more than them. 10 points for both of them. A couple of teams on 8 points. That's Northern and Balochistan, 80th Southern Punjab and Central Punjab on 6 points. It's everybody's tournament still, and we have plenty of more exciting action
coming your way. Thoroughly entertaining day of cricket, and tomorrow is a day off. We'll be back on 15th of September, day after tomorrow. The first game, the afternoon game, will be Balochistan between Northern and Central Punjab will lock horns with all-conquering Sindh now in the evening match for the Kingdom Valley National T20 Cup that will come to you live from Multan Cricket Stadium on the 15th of September. Well, it has been a thoroughly entertaining day, action-packed from beginning till the finish, and we look forward to more of the same action when we come back after a day's break. Until then, from all of us here at the Multan Cricket Stadium, good night. Here we are, the city of Sindh, Multan. All set and ready for match 24. Sindh versus